Hello, good evening, assalamu alaikum and welcome to Vantage Developers presents Game On है. मैं हूँ रोहान अदीम and it's the super sensational Sunday. The Sunday that we had all been waiting for months and months. It's finally here. It's the day that the people of Nassau County, New York will not recognize their city. They'll wake up, they'll go out of their homes to grab their coffees and bagels, and they'll look around and it will be a huge tsunami of blues and greens, because that's all you expect when an India and Pakistan encounter is taking place in the neighborhood. हमने बस काफ़ी क्रिएट की है इस मैच की, करने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे ही फिक्सचर्स अनाउंस होते हैं किसी भी वर्ल्ड कप के, तो इस गेम की जितनी एक्साइटमेंट होती है, विद इन मिनट्स इट्स ऑल सोल्ड आउट एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग एंगल है वो ये है कि एक कम्प्लीटली न्यू कंट्री, एक न्यू कॉन्टिनेंट में जी क्रिकेट जो है वो अपने झंडे गाड़ने जा रही है. एंड वी ओनली होप कि यहाँ से ग्रोथ जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और इसी से पूरे अमेरिका को और पूरी दुनिया को हम दिखाएं व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट it can be when these two countries come together, and we can't wait to see what unfolds today as the match will go on. I'm going to introduce my beautiful Aussie co-host who has joined us from so far away. Erin Holland is here on the panel of Game On. Hey, Erin, welcome back. Lovely. You look great in your greens, and I can't wait to get your reaction firstly on what you think is going to happen today, because a lot is contextual with this game, right? We saw what India did in their first game, but Pakistan, well, they do appear a bit shaky. What are your neutral thoughts on this game? Well, bahut shukriya for that lovely introduction. Thank you so much. It's an absolute pleasure to be here, and what a time to be alive. Of course, India versus Pakistan in America. It doesn't get any bigger than this. And I have to say that even though we're some 11,000 kilometers away from New York City, the sense of anticipation is palpable. You can feel it. Cricket has come to America. It's landed. And if you hadn't realized that it had, as you said, Roha, wait until you walk out of your house today in New York City, because cricket fever has taken over, and one of the fiercest rivalries, one of the longest rivalries in T20 World Cups gets underway again today. I can't wait to see what happens. I actually think it's going to be a much closer contest than perhaps some people have been saying online. I think this is the wicket that Pakistan can absolutely upset India, and I can't wait to see what happens. It's going to be a really interesting game, and you know, we can chat about this for hours, but we've got a wonderful panel of experts alongside us to help us analyse as much as we can the Maha match of the group stages, it has to be said, perhaps even the World Cup, if I'm not too brazen to say so. So it's my absolute pleasure to welcome still the fastest man. Oh yeah. The fastest man on the planet still, Shoaib Akhtar. He's back in the PTV studios, Mr. 161.3 kilometres per hour himself. Shoaib, big game today. How's the feelings? How are the nerves? Same as usual. I'm going to be a bit emotional today because it's a very emotional day for us as a nation, because, you know, the cricket is, it goes far beyond than our emotions. And the whole Pakistan is connected right now onto one dot, which is cricket, which is India and Pakistan. We all been through this. We all had great games. Please don't feel left out if I speak in my own language, because people wanted to hear me out in my own words, in my own style. She knows more to do than you think. So my apology up front, Martin. बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए. देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तानी बिल्कुल मोराल हमारा टूटा हुआ है. यूएसए से हम हार चुके हैं, कश्तियाँ हमने जला दी हैं, और 7 ब्रिज को भी हमने खुद ही आग लगा दी. अब हमने करना क्या है? तैर के जाना है. क्या बात? ओपोनेंट बहुत सख्त है यहाँ पे आई मीन आपको यहाँ पे अब ये एक ही मौका है, यहाँ पे लड़ के आगे जाना होगा. अगर आपने ये अपसेट कर दिया आज, अगर आप ये मैच मार गए, फैंटी लगा गए, विकेट जैसा भी है, अच्छा बुरा, टॉस जीत के अगर आपको चांस मिल गया बॉल सीम करने का, स्विंग करने का, सो आई बेट माई लाइफ ये अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिवली जीतेगा. क्या बात है. लेकिन अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब आज हो गया, मैं दावा तो नहीं कर सकता, दावा अल्लाह की ज़ात कर सकती है, पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द सेमीज, अगर आज ये हर्डल पार कर गया. क्या बात है. और आई एम विद यू, whole nation is with you. And you know what?
there is a 6-year-old child, you know, that is watching this game with the parents today. He will be start playing cricket at 11:30 at night when Pakistan wins against India. You are actually asking the whole generation to start playing cricket because you won against India. I remember how I played this game. People does not remember your milestone. Please, for heaven's sake, if you're listening to me, people remember Javed Miandaj ka chakka. बिल्कुल. Nobody knows जावेद ने कितने रन्स किए, यूनुस खान ने कितने किए. यूनुस खान ने 2009 को वर्ल्ड कप याद है. हफीज की मुझे सेंचुरी याद नहीं है. वो 40 रन याद है चैंपियंस ट्रॉफी वाले मुझे. वो मुझे 37 रन याद, जहाँ में 300 हो सकता तो 338 हो गया. People remember the victories for the countries, not the personal milestone. But you go out there, play out of your skin, play for each other, play for Pakistan. Make sure what you're desiring. For that you have to collaborate with each other and do not be fearful. What is the point of being fearful? You're going to lose against India, that is fine. It's okay. How many times we have won against India in World Cup? आज हार गए तो क्या हो जाएगा? But all I'm saying is don't play for yourself. Play for each other. For heaven's sake, the whole country is morally so down. Every kid and a child is looking up to you. Please give me a chance to start playing cricket again at 11:30 tonight with the celebration. Beautiful. Got goosebumps. Butter words from the Rawalpindi Express there. I'm excited. That's just absolutely G'd me up. And, you know, let's not beat around the bush. This is a massive moment in cricket. Over 2 billion people will watch this game today. The wait list for these tickets is rumoured to be about 8 million Roha, because it's only a 35,000 person stadium. But imagine the vibe in and around that compound in Long Island. New York City is going to be alight today. And I'm not the only foreigner we've got here on the panel today who gets to soak up this atmosphere of one of cricket's biggest rivalries. Martin Guptill, one of the best strikers in cricket for New Zealand in his illustrious career. 7 World Cups under his belt. He certainly knows a thing or two about what it takes to get to a final. Guffy, welcome back. How are you? What are your thoughts and feelings ahead of the big clash today? You're on neutral ground like me a little bit, but what are you thinking? Yeah, it's going to be a good game. It's a grudge match. It's probably the most anticipated game probably this year, I would say. And, you know, just the fanfare and everything, the following, it's going to be huge. I'm excited to watch on TV and see and hear the crowd. It's going to be electric, isn't it? I mean, you're going to have your section of blues, your section of greens, and it's going to be great fun to watch. You know, I get the feeling it's like a baseball game, the New York Yankees against the Boston Red Sox. Just that, not necessarily hatred, but, you know, just that competitiveness coming together. Fans getting in each other's faces, supporting their players. It's going to be great, and I think everybody here is hoping for a Pakistan victory and just a great game of cricket. Can't wait to see what unfolds, and as the fans will be making their way to the stadium just shortly. Can't wait to see the blues and greens. Yunus, we've got a World Cup winning captain here with us. 2009, he lifted the trophy for Pakistan, and he knows what it takes to win against India and to win at that stage. Yunus Khan, welcome back to Game On Hai. Lovely to have you and your expertise. क्विक सा कमेंट आपसे भी लेंगे कि हम बिल्डअप अभी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या ही कह सकते हैं इस बिल्डअप में. वी ऑल नो व्हाट इट मींस टू द एंटायर कंट्री. मेरे ख्याल से कुछ कहने के लिए बाकी रह नहीं गया. अब तो करने का टाइम है. और जहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो ये सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे ये 22 प्लेयर खेल रहे हैं, 2 नेशंस खेल रही होती हैं. और जो गेम ग्राउंड में तो होगा, तो क्राउड में भी गेम हो रहा होगा. मेरे ख्याल से अगर आज मैं ये कहूँ कि मार्च पे भी कोई बैठा होगा ना आज, तो वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा होगा. तो मेक श्योर करें कि जैसे हम यहाँ बार बार बात कर रहे हैं कि मुल्क के लिए खेलें. हम भी ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे यहाँ पे बैठ के कि पर्सनल माइलस्टोन जो होते हैं वो नहीं काउंट होते हैं ठीक है होते हैं. आपके जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा जब ये गूगल खुलेगा, हमारे स्टैट्स खुलेंगे तो शोएब अख्तर के मुतालिक बात होगी कि जी उन्होंने ऐसा बॉल किया, यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जिताया, मोहम्मद हफीज़ ने क्या किया, मार्टिन गप्टिल ने क्या क्या किया. वो रहेंगे वहाँ पर. लेकिन जब ये कहा जाएगा कि वो टीम मैन थे, उनकी वो परफॉर्मेंसेस जो वो याद रहती हैं, मैच विनर थे, तो यही. और फिर आप एक चलो मैच विनर ही बन जाते हो, आप क्राउड के प्लेयर बनो. तो मेक श्योर कि ये इंटेंशन होने चाहिए. और उसके बाद वही बात है कि आएँ और बस आज स्किन से बाहर आ जाएँ.
और मैच जीते हैं। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियंस भी यही चाह रहे होंगे वो भी इसी तरह खेलें, क्योंकि यही एक मैच है। और पता नहीं फिर बाद पर पाकिस्तान इंडिया न्यूयॉर्क में कब खेलेगी, यू नेवर नो, कब होती भी है नहीं होती। मेरे ख्याल से आज इस वेन्यू को जो है फॉरएवर अपने लिए यादगार बना ले। चलिए, one of our other experts who is also a format veteran across formats, उनकी बेशुमार contributions रही हैं for Pakistan cricket, the all-rounder, the professor, one of the finest all-rounders actually to ever play the game, especially in the shorter formats. Mohammad Hafiz, the professor, welcome back to Game On है। बिल्ड अप करने की कोशिश हो रही है न्यूयॉर्क में इस वक्त, क्या नज़ारे होंगे, कैसे फैंस अपने आप को एंटिसिपेट कर रहे होंगे, और जो पाकिस्तानी फैंस आज मैच देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा जिनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये मैच ऐसा है कि सिर्फ इसके पाकिस्तान और इंडिया के फ़ैन नहीं है, पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फ़ैन है वो इसके फ़ैन है। तो इसकी जो मोस्ट व्यूअरशिप है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये मोस्ट व्यूड जो है वो गेम बन जाता है और पूरी दुनिया इसके साथ ग्लू हो जाती है इस मैच के साथ। तो मुझे सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि एज ए एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम एक स्पिरिटेड वे में एक स्पिरिटेड डिस्प्ले करे। हार जीत आई डोंट केयर अबाउट इट, अगर स्पिरिटेड वे में खेला जाएगा, जीतेंगे बहुत मज़ा आएगा, हार भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर हमें स्पिरिटेड डिस्प्ले ना मिला तो फिर वो दिल टूट जाते हैं। जो शुएब भाई ने बात की कि हम सब लोगों की जब हम पाकिस्तान के लिए या नेशनल कैप जब ऑन करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंस्पिरेशन फॉर द न्यू जनरेशन। तो वो इंस्पायर क्या चीज़ करती है? मुझे शुएब अख्तर के स्टैट नहीं याद, मुझे ये याद है कि उन्होंने जो 2 आउट किए हैं सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ के, वो क्या थे। मुझे यूनुस भाई के मतलब कुछ नहीं पता कितने सो हैं, मुझे ये याद है कि इनके 10,000 रन है पाकिस्तान के लिए और पहला पाकिस्तानी है जिसने 10,000 टेस्ट रन किए। मुझे ये याद है ये 2009 का चैंपियन कप्तान है, स्कोर कितना किया हुआ है मुझे ये नहीं याद। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स ऑल अबाउट द टीम। जो इंडिविजुअल है वो कभी भी टीम से बड़ा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम में से कुछ लोगों ने, हमारे में से कुछ मीडिया ग्रुप्स ने, हमारे में से कुछ एजेंट्स ने, कुछ मैनेजर हजरात ने प्लेयर को टीम से बड़ा करने की कोशिश की है। वहाँ पे डैमेज हुआ पाकिस्तान का जो ब्रांड है। अब वापस आने का जो है टाइम आ गया। अगर आज हम लोग जीतते हैं और एक बड़ी स्टेटमेंट देते हैं तो वो जितने रूठे हुए फ़ैन हैं, जितनी वो नाउमीदी है दिल के अंदर, वो सब ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम चाहते ही ये हैं कि पाकिस्तान एक स्पिरिटेड वे में खेले और अगर ये मैच जीत जाता है तो हम इंस्पायर करेंगे। वो 6 साल वाले बच्चे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि उससे भी ज़्यादा वो जो बहुत ज़्यादा उम्र के उस हिस्से में मौजूद हैं वो यही देखना चाहते हैं। मैं बुज़ुर्ग लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो दुआएं कर रहे होते हैं कि हम जीतें, पाकिस्तान जीते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ ये दिखाना है कि हम इस मैच को लेके रेडी हैं और हम जीत के दिखाएंगे बस। A lot of exciting words from our panel, Erin. We have to, of course, build up. We're counting down to the big game. As I said, it is a super sensational Sunday. So before we formally get towards building up for the match, it's important to quickly take a look at what else went on in the early hours of the morning. We saw a pretty one-sided game, a demolition from the West Indies against Uganda. You can see that West Indies were completely storming out there with the bat. 173 was the total. Johnson Charles top scored for them. Rutherford, इनके पावेल, रसल, ये सारे T20 फॉर्मेट के वेटरन्स हैं। एंड जवाब में जी युगांडा को 39 पे ऑल आउट कर दिया इन्होंने। दिस वाज द मैच। अकील हुसैन पिकिंग अप 5 wickets and of course the top performer player of the match from this important game. And in the end, of course, West Indies winning by a huge margin of 134 runs, which of course translates really well into the points table for them, because they're not just 2 points up, but they also have that net run rate, Erin, going really well for them. So 3.5 in the positive, and then they have 4 points from their 2 wins in 2 games. Uganda just below them with 2 points only, but that net run rate after this loss would have really damaged them. Oh, absolutely. And I think if you're a New Zealand fan, Guppy, I come to you very quickly for a comment on this. That Group C looks very tricky now for them to try and qualify. That net run rate in the -4s. We're not used to seeing the Kiwis in that position. Yes, they've still got teams ahead of them which are considered associate nations, but a lot of work for them to do to make up that lost ground. Yeah, there certainly is. I think the writing's on the wall. They need to win their last 3 games and hope that West Indies, drop a game against maybe Afghanistan or, obviously lose to New Zealand as well. So it's
New Zealand know what they need to do, and they would have reflected pretty quickly on what happened in Guyana, and they're moving on to Trinidad now to play 3 games at the Sir Brian Lara Stadium there. So they know what they need to do, so they'll go out ready to go at training and want to put in the hard yards. Yeah. Right, coming back to, of course, India and Pakistan, we have seen so far, Shoaib, in this World Cup, हम किसी भी टीम को देख लें, हम किसी को एसोसिएट या वीकर का टैग नहीं दे सकते, बिकॉज ईच गेम इज़ नाउ देर आर मोर अपसेट्स पॉपिंग अप, और बड़ी टीम्स जो हैं वो सरप्राइज हो रही हैं, शॉक हो रही है. हमने पाकिस्तान को देखा, न्यूजीलैंड को देखा. आपकी अब क्या उम्मीदें हैं गोइंग इनटू दिस मैच? बिकॉज एक जो बज वर्ड क्रिएट हुआ है वो है पिच का, वो है कंडीशंस का. वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस कमिंग इन फ्रॉम दैट रिगार्डिंग द पिच. ड्रॉप इन है तो थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, अनइवन बाउंस था. कह रहे हैं कि ग्रास अब रिमूव कर दी है थोड़ा सा उसको टैकल करने के लिए, बट डू यू थिंक बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा ऑन द गिवन डे? We see the fear multiply faster than a rabbit. So what I'm just saying is to you is that don't be fearful. I know toss has a huge advantage. Pakistan would love to win the toss with the 4 paces, going in with unpredictable pitch. गए अंदर 4 ऐसे उल्टा दिया टीम, 5 बैट्समैन शायद उतर जाए उनके, तो इंडिया प्रेशर में आ जाएगा. इंडिया वुड नेवर टेक पाकिस्तान इन एनी फॉर्मेट लाइटली, पीरियड, सिंपल. वो डरते हैं पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से घबराते हैं. पाकिस्तान का डर रहता है इंडिया पे, वो कहीं मारे ना जाए, उतना ही प्रेशर उन पे है. लेकिन वो थोड़े कंपोज्ड हैं, फोकस्ड हैं, किरदार पता है कहाँ पे मैंने बैटिंग करनी है, हर बंदे को अपना रोल पता है, हर बंदा मिच्योर है. मिच्योरिटी का लेवल थोड़ा फर्क है, बट दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से इज अगर टॉस हाथ में आ जाए तो तगड़े हो जाओ, ना भी आए और तगड़े हो जाओ. लेकिन यकीन करिए विकेट को बहुत कोशिश करके उन्होंने स्मूथ किया हुआ है कि विकेट पे कहीं 150 प्लस रन हो जाए. लेकिन इंडिया ऑलरेडी क्योंकि न्यूयॉर्क में खेल चुका है, वो भी कहीं ना कहीं यार अब advantage ये होगा. हम एक्सक्यूजेस पे रोआ नहीं जाएंगे कि वो उनको $250 मिलता है कनाडा अपना अमेरिका वालों को, और जॉब भी करते हैं, वो देख कितना प्रोफेशनल खेल रहे हैं. ये हमारे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, ये अब हम एक्सक्यूजेस पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना. एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो जीतना चाहते हैं. हमारी प्रायोरिटी जीतना है कि नहीं है, हमने जीतना है कि नहीं है, हमने अपनी इंसान के पुत्रों वाला काम करना है कि नहीं करना. इट्स वेरी सिंपल एज. ये बात नहीं है, सॉरी, हम सब तुम तीनों खेले हुए हैं. हमें पाकिस्तान का इनसाइड आउट पता है, हमें क्रिकेट बोर्ड का भी पता है, हमें सिलेक्शन का भी पता है, हमें लड़कों को पता है. हम खोल के कुछ इसलिए नहीं कहते कि यार चलो बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, कहें क्योंकि सही इम्पोर्टेंट है, है. इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा ज्यादा, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहा. पता हमें सारा कुछ है. स्ट्राइक रेट क्यों नीचे जा रहा है, किसके ऑर्डर कहाँ बने, किसको कहाँ खेलना चाहिए, किसको कब बॉलिंग करनी, किस पर क्या मसला चल रहा है, हमें सारा पता है. बट ऑल आई एम सेइंग इज जस्ट एज अ कैप्टन, गो आउट देयर, मेक अ बेस्ट यूज आउट ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स. कैपिटलाइज द सिचुएशन इफ पॉसिबल, और डरना नहीं है, खुदा का वास्ता डरना नहीं है. कुछ नहीं होता बाबर, कुछ नहीं होता. लड़के खेल जा, खुद आ जाओ ओपनर, नीचे आ जा, पावर प्ले में आ जा, जहां पे आ जा, बल्ला उठा, मार, पड़ जा पीछे, पूरी कौम को उठा के साथ ले जा. सारी आंखें पता किस पे, बाबर पे. पूरी टीम कहां देख रही है, बाबर. मैं खड़ा हूं बाबर के साथ. बाबर उठ जा, पड़ जा इंडिया को, फैंटी लगा और आ जा. ये अगर आज ये दिन जीत जाता है अपने लिए, खुदाई के पूरा पाकिस्तान इसको सुपरस्टार बनाएगा. सुपरस्टार है हमारा. मैं चाहता हूं लेगेसी क्रिएट हो, और आज का दिन तारीखी दिन है. आज का मैच याद रहने वाला है. आज की फुटेज अगले 3 साल बाद चलेगी, अगले वर्ल्ड कप में चलेगी, याद रहेगा. मैं हमेशा कई फॉर्मर कैप्टन को वो ठक ठक करके खेलते, मैं मना करता था, ना कर, लेगेसी क्रिएट नहीं होगी. बिल्कुल. सो लेगेसी क्रिएट. Well, big words. I mean, I understood a lot of that, and I think the notion of taking the game on the front foot, Babar Azam leading from the front, no excuses, whichever way the toss goes today, there is a way. And Hafiz, I come to you on this question because yes, this is one of the consequences of erecting an international cricketing stadium
out of a parkland in a mere few months. Yes, the drop in wickets haven't taken as well as we would have liked, but we saw Canada defend 137. There is a way to defend these lower totals. It's not impossible. What do you think for Pakistan's state of mind heading into this particular, it's a new venue, we know it's a difficult wicket, but what would you say off the back of what Shoaib's just alluded to in terms of the intent that Pakistan need to take today? Well, obviously the conditions are very obvious. Everyone knows what the condition is going to be of offering to you. So as a player, you need to adapt accordingly. Forget about toss. I always say, and Yunus also mentioned as a champion captain, we have to come out of the comfort zone. If we lost the toss, then too we have to display our best of the cricket. You cannot just rely on a toss, that if we win a toss, we will show the best body language. No. I'm predicting one thing to you. I would love to see the team losing the toss and winning the game. Yes. Yeah. If you want to be a champion, no matter as a Pakistani, as an Indian, I wanted a team to win this game after losing the toss, because this is only the mindset that if we win the toss, we will play well. No. You have to play well no matter what conditions are in front of you. So I personally would like to see this kind of cricket where the players will come out of their skin, the players will show the greater hunger to win this game rather than going in with the motion. I told you, like, this smooth sailors never be a champion. You need to come out of it. You need to understand that this game of cricket demands or requires all the body language out of you when you will get challenged by the conditions. So if you are only a conditional player, you are not a champion then. So simple is that. To me, Pakistan should not think about the condition, should not have any excuse in their mind. They just go out there and show a spirited effort to win. I don't care if they lose the game, but if the display of cricket is on that level where we wanted to watch the game of cricket, then I will be very happy. I think given the rise of franchise cricket, it's so wonderful to see so much rivalry and so much passion that involved in a game of cricket. Sometimes I think with the amount players play together, sometimes you lose that niggle and that ferocity that makes for such a wonderfully contested game. And I think that's why this rivalry, because it's so untouched in that respect, makes it so intriguing and exciting to watch. I mean, we've just scratched the surface of things to discuss in terms of building up to this big match. India taking on Pakistan in the Big Apple. We're off to a very short break here on Vantage Developers presents Game on Hair. But stick with us because, Roha, my word, we've got a lot to get through on the other side. Ji, welcome back to Vantage Developers presents Game on Hair. We're building up to match number 19. It's the super sensational Sunday. It's finally here. India versus Pakistan, live from New York City. We will be taking you to the live action. Before that, the toss, pitch report, all of the live updates from Nassau County, and of course that weather. We have a little bit of rain prediction coming in around 10-11, but it's just a passing shower, 20%, 30%. So tension की कोई बात नहीं है. थोड़े cloudy, overcast conditions होंगे. Hopefully a good full game of cricket. But हमने break से पहले काफी build up किया, and we saw what our guests had to add on what it means to all Pakistan fans, to all India fans, and to all cricket fans around the globe. But जितने billions of fans आज tune in करेंगे, hopefully उससे भी ज़्यादा new fans आज बनेंगे cricket के, because of course this sport is taking over a whole new continent. So America, are you ready for the game of cricket? I don't think they're ready for this, Roha. I don't think so either, but it's going to be pretty exciting, Erin, because the numbers are just going to multiply, and we can't wait to see what happens. Taking it back to our perfect expert panel, जिन्होंने break से पहले काफी build up किया. Yunus, coming to you now with a little bit of build up. अभी थोड़ी देर के बाद हम और stats वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि going into this match थोड़े even नहीं नजर आ रही दोनों teams, to be very fair, क्योंकि of course World Cup का context अगर आप देखें, पहले games पाकिस्तान अपना पहला मैच हारा अगेंस्ट यूएस, और इंडिया को बड़ी कन्विंसिंग जो विन ओवर आयरलैंड थी.
कितना इम्पैक्ट होता है पहली गेम का ऑन अ बिग गेम लाइक दिस इंडिया पाकिस्तान, बिकॉज आप भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं जिसमें पाकिस्तान ने 2009 में 2009 का स्टार्ट बिल्कुल आइडियल नहीं हुआ था, बट देन वी वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप. सो व्हाट डज द फर्स्ट गेम मीन इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड कॉन्टेक्स्ट? पढ़ सकता है, लेकिन देखें जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो ये नहीं, इसका नहीं पड़ता है बाज़ औक़ात, क्योंकि आप अपने स्किन से बाहर आते हो. मुझे याद है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2009 में जब साउथ अफ्रीका में मैच खेल रहे थे और मोहम्मद आमिर जस्ट आए थे, एक आधा साल हुआ था, एक वर्ल्ड कप खेला हुआ था उन्होंने T20 का. तो मैं प्रेस में था और मुझसे एक क्वेश्चन हुआ सचिन के लिए. तो अच्छा, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि वो इंडियन है तो हम उनकी जो उनकी अचीवमेंट है, जो परफॉर्मेंसेस है वो सारी दुनिया के सामने है, तो उसमें कोई बात हमें नहीं बनती उनके अगेंस्ट कोई बात करना. ठीक है, जब हमारे ओपोनेंट होते तो हम चाहते हैं कि वो रन ना करें, परफॉर्म ना करें और हम उनको पछाड़ दें. ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है. लेकिन मेरे मुंह से खैर मैं बाई प्लान था कि मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं क्या जवाब दूँ. मेरे पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि वो कोई जिन नहीं है. और अगर आप आज भी देखोगे तो उस पर यह है कि वो यूनुस खान कह रहे हैं कि वो कोई जिन ही नहीं है. तो मेरी एक ऐसे मैंने बात की. और नेक्स्ट डे क्या हुआ, मोहम्मद आमिर आए और उन्होंने कोई दूसरे तीसरे ओवर में उनको आउट कर दिया. यंग, बिल्कुल यंग थे, 18-19 साल उनकी उम्र थी. तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि सचिन, द्रविड़ सब थे उसमें और हमने वो मैच को 50 रन से जीत लिया साउथ अफ्रीका में. और हमारी टीम इसी तरह थी, उनकी तो बहुत मेच्योर टीम थी और हमारी टीम उसमें 4-5 यंग लड़के प्लेयर्स आ रहे थे, उमर अकमल की शक्ल में, मोहम्मद आमिर की शक्ल में, ऐसे प्लेयर्स थे. तो देखिए, जब इस तरह के गेम्स होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता. मैं सही बता रहा हूँ, आज का एक मैच पाकिस्तान के लिए एक विन चाहिए और क्या ही बात हो, आज का विन हो जाएगा. फिर आप देखिएगा यहाँ बैठ के हमारी टून चेंज हो जाएगी, हमारे जो परफॉर्म करेंगे, बाबर आजम की बात करेंगे, मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे, फ़खर जमान की बात करेंगे, और कितने आपको प्लेयर चाहिए, बादर सल में ये. फिर फास्ट बॉलिंग देख लें, और कितने फास्ट बॉलिंग चाहिए आपको. सिर्फ वही वाली बात है कि आपको ये गैदर कैसे करना है. अगर आज और टुगेदर होकर खेलते हैं, और मैं ये फिर बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल माइलस्टोन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के, मैं अपने पैनल के उससे बिहाफ बात करूँगा कि होते हैं, ऐसा बात नहीं है, होते हैं. लेकिन जब ऐसे गेम्स होते हैं ना, तो उसमें अपने स्किन से बाहर आना, उसमें पर्सनल फिर आपके कोई एंगल्स नहीं होने चाहिए. आप आए आज खेलें और देखें, और आज सारी दुनिया के लिए खेलें. सारी दुनिया ये मैच देख रही है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं देख रहे, मार्स पे नहीं देख रहे, पता नहीं कहाँ से लोग देख रहे हैं, वो कहाँ. एक और बात, हम बच्चों की बात कर रहे हैं ना, यकीन करें जो बच्चे भी आने दुनिया में वो भी आज देख रहे होंगे इस मैच. तो इसलिए ये इतना बड़ा गेम है, इतना बड़ा गेम है. Extraterrestrial, but we have some live images of the stadium. We can see a little bit of crowd building up, Erin, but it still looks like it'll be a couple of hours before we get all the people to fill those stands. But there's blue sky. I think that's the most important thing, isn't it? We want that cloud to stay away. We don't want this to be a rain-affected match. But you know, one thing that we keep talking about post the shocking defeat, it has to be said, when Pakistan went down to the USA in their first match, is who is going to play for the team, play for the country today? Who is going to come out in the playing 11 for Pakistan? So, Hafiz, I come to you on this point because we've got a graphic here that actually shows that Pakistan have fielded the most players for their country since 2023. So you've got in 27 matches, they've had 41 players don the green of Pakistan. And on the other hand, you've got the likes of England, who've only fielded 21 players. So a lot of contention around the playing 11 for Pakistan as we relive that stat I just said to you there. We know Ahmad Wasim is fit. He's been declared fit. Do you expect him to slot into the playing 11 today, or do you think much will change based on the outfit we saw go down to USA in the first match? Well, first of all, regarding giving more opportunities to the players, I've tried some of the, extra players. Understandable, because Pakistan was looking for a right combination. They wanted to have the best minds, best playing 11 for this World Cup, and they already got that, because before this World Cup they had a 3 series, one here in Pakistan with New Zealand, then Ireland, and then England, and then obviously the PSL stage was there to judge the talent of some of the players if there's any doubt in the mindset of the selectors. So the selector tried the level best, and they think this is the best team. I personally feel they left out some of the very good players, but anyway, let's move on. Whatever they given to us, we are supporting them. At the moment, Pakistan team, if Imad plays, he has to play his role. He should not think about his injury at the moment.
because if he's there for this game, if he's there for the World Cup stage, no matter what, you have to take this on. 100%. Forget about your injury, forget whatever you are going through with, because people want to see a win and the performances from each and every individual. Who cares who was injured? Who cares who was having a niggers? Who cares who was not feeling comfortable? Because what people want to see a good effort and win for the Pakistan team. So at the moment, I believe if Imad get the opportunity, he should take that opportunity positively, rather than going into this game with the mindset like he's not feeling well. And all other players, even though if Haris given 15 runs in the last match, Amir couldn't bowl well in the last match, just forget that, boy. Because this game will give you a new challenges, will ask new questions from you, and you need to give the answer accordingly. So I think everyone, whoever will be picked for the side, should be ready for this opportunity to grab it from the both hands. And if you do well, you will be the hero of the Pakistan nation. And then what next reward you wanted to. So I think I'm okay with that. Whatever the stats are been shown, like we tried 41 players. Yes, we wanted to have the best combination. We got that. At the moment, whoever will be in the squad, whoever will be given the opportunity by the team management, have to take that responsibility to deliver. So would you stick with the same playing 11 though that we saw last game? Well, I think they will go, because if they will have a massive changes, it means they got into the panic zone. Yeah. So if there's no, because whatever you That's make the your worry. plans, you are very sure to apply those plans in the first game. But if after a loss you are again going back to somewhere, it means you are not sure about your plans. So I think there will not be a massive changes. If they wanted to replace one of the fast bowler, or maybe Azam Khan, because he's not performing well. So if you think that Imad can come as a batsman who can give you some like 4 overs, that is fine, because we all know he's handy with the bat, he's handy with the ball. Yeah, one of the best all-rounders in this format of the game, absolutely, it has to be said. Big in for Pakistan, the fact that he is able to play today. He said, I'm injury-free, I'm good to go, and I think many fans all around the country will be happy to hear that, especially based off the back of that loss. But another reason why he becomes so important, Guppy, is the fact that he offers you the spins for those middle overs. We've said it time and time again. This World Cup in particular, those middle overs with the bat and the ball are so incredibly crucial. And one of the biggest concerns for Pakistan in T20s this year has been their bowling in the middle phase. Imad Wasim's been out of the side for a while, it has to be said. We've got him back for this T20 World Cup. But look at this, team's economy in the middle phases in T20s this year. Pakistan are down the bottom. They're 8.7. They're leaking 8.7 runs. That's a lot of scoreboard pressure off the back of a positive power play, it has to be said, if, say, Shaheen isn't firing with the ball up front, as we so often see him do. Is Imad Wasim the missing key to sort of bolstering the forces in terms of bowling in that post-power play? Yeah, he could be, but we also know that Imad does bowl a lot in the power play as well. He's not your conventional left-arm orthodox spinner. He does utilise swing. He releases the ball like this, and the ball does come back into the stump. So whether he opens the bowling or not today, I'm not sure. It's something he has done a lot in the past. And I think they will be looking to him in the middle overs. He might bowl 1 or 2 in the power play and look to finish off in the middle overs. And they've also got Shadab, who we know can do a really good job. His confidence may be down a little bit with his bowling, but I think hoping for Pakistan's sake that he can find something today, if given the opportunity, to help out Imad, because it is a lot for one person to just take on that mantle of, we need a couple of low scoring overs. Imad, you have to do the job for us. You've got to spread it out across the whole bowling unit. Even the workload. Right, Shoaib, I'm going to come to you. Of course, your opinions on the fast bowling. We know 4 seamers expected हैं. Spinners के end पे अगर इमाद वसीम आज खेलते हैं, that will of course support Pakistan, especially in those middle overs. But fast bowling में अभी भी कुछ areas हैं जहाँ पे पाकिस्तान को concern है, especially हारिस रऊफ की form. Of course, उनको जो injury हुई, then he was out of the side for a while. उनके कुछ लेटेस्ट स्टैट्स पे अगर हम डिस्कस कर ले 2024 में नॉट बिन हैविंग द ग्रेटेस्ट टाइम इन दिस ईयर इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप, और जो डॉट बॉल प्रेशर वो डालते हैं वो भी ड्रॉप हुआ है. 15 विकेट सिर्फ उन्होंने लिए हैं लास्ट 11 गेम्स उन्होंने खेली हैं, और इकोनॉमी ऑलमोस्ट टचिंग 10. इज दिस अ वरी गोइंग इनटू दिस गेम? Well, the answer to the first question that I would have asked Martin Guptill, the team run rate in a power play in T20 since 2021, Pakistan is the lowest.
just about Pakistan? I'm going to leave that question to you and to the rest of the panel. हमने सबसे ज़्यादा कम स्कोर किया हुआ है पावर प्ले में, by the way, since 2021. Now come back to the Pakistan fast bowling, pace battery. I think overcast, cloudy, seam, and at the same time, one of the best pace battery attack that Pakistan could ask for. And there is a 4 are out there. The best guy to start off with, Shaheen, and second next to the best guy, Naseem Shah. Well, he's hitting the deck hard. He asked you many questions in a very difficult lens. Trust me, India इतने प्रेशर में है इस वक्त कि ओवरकास्ट भी है, बारिश भी हो सकती है, 4 सीमर हों, स्पिनर तक जाना ही नहीं. अब अमाद खिलाते हो. अमाद पहला मैच खेला नहीं, कितनी देर से नहीं खेला. अब और सर इतने बड़े मैच में I would go for fit player rather than half fit player. Same team. नहीं, मुझे लगता है साइम अयूब आजम खान जा खिलाएंगे. Okay. और माइट शादाब विल ड्रॉप एंड वो शायद आए, अमाद आए शायद, हमारी प्रोडिक्शन पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे गोना डू, बट हमें उसकी सिलेक्शन से पता चलेगा पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ जाना चाह रहा है. वो बहुत ज़्यादा इधर हड़ाउड़ी ना करें, ठीक है, इट्स ओके, सेटल डाउन, इट्स ओके. और मुझे ये लगता है कि वरिंग पॉइंट जो हमारा है, एबल टू टेक विकेट्स, नॉट एबल टू कंट्रोल रन्स इन द मिडल. हारिस एक स्ट्रेंथ है विकेट टेकिंग. अब जब उसको ये कह रहे हैं बॉलिंग इधर करो, बॉलिंग इधर करो, इधर बॉलिंग करो, इधर बॉलिंग करो, वो इधर बॉलिंग करने से विकेट नहीं मिलती. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जब कप्तान इतना बोल रहा होगा ना, एक तरफ बॉलिंग करो, एक तरफ बॉलिंग, उस तरह विकेट नहीं मिलती. लेट हिम बी लूज, लेट हिम गो आउट देयर. लिसन, योर जॉब इज, आई एम गिविंग यू 60 odd runs. Hey, you take it, this is the license, please get me 4 wickets. If given a good day, please give about 45 runs and take 4 wickets. Well, we gotta treat, you gotta have to treat the fast bowler like a babies. They are a big babies. All you have to do is just tap them on the shoulder. Hey, listen, Meri Jaan, this is your ball. Go out there, do whatever you want. It's very simple. किमें दोबारा करना. The best captain who captained me, we said, this is the ball, do whatever you want. If you're in the mood, even the opponent used to watch my warm-up. If he's in the mood, he's warming up well, he's doing his thing. Hey, listen, stay away from him. और एज ए कैप्टन आपको पता लग जाता है. और अगर जब आप फास्ट बॉलर को आप जब ये कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, पीछे क्यों किया है? So that release of pressure immediately. That you destroy the fast bowler. Yeah. He doesn't know what to do, what length he has to bowl. Either he's going to go for the bounces, either he's going to go for Yorkers. Listen, just tell him a simple task, take wickets. Yeah. I don't care. You're the captain of the whole team, you're running the whole show. The taking the ownership of the ground, that what makes you the hero. Pakistan team needs to take the ownership of the ground. Let us run the show. It is all about you. Cricket is not about team. It's about when you're running in for 5 seconds and you're playing for a fraction of a half second to the 150 plus. Hey, listen, you're controlling the show. So what you need to do is just create your own brand of cricket today and make sure, yaar, dikha do yaar. Haris, take wickets. जा विकटें ले, रिलैक्स कर. बाबर क्या यार इजी हो जा, मुझे जोर लगाने दे. शाहीन कर, शाहीन तो सुनता नहीं बात, लेकिन कर. आज ओवरकास्ट कंडीशन में अगर पाकिस्तान अपनी पेस बैटरी को यूटिलाइज कर गया सही, टॉस जीत के, और टॉस ना भी जीता, दफा करें जी, वापस दोबारा गए. यहाँ पे 130 भी चेज बड़ा औखा होना है, ये याद रखिएगा. यहाँ पे 140 बड़ा औखा चेज होना है. दिस इज नॉट वेरी इजी विकेट टू चेज डाउन 140 or 130. Trust me, with this fast battery, trust me, you're gonna trouble. And India is not taking Pakistan lightly. I mean, let me tell you right now, with this drop in pitch, with this kind of condition, Pakistan is right back in the game to win it. I couldn't agree more. And the point that you make as well, at the end of the day, at this highest level, there is talent in every single team. What sets teams apart is the belief, it's the ability to have the mindset And to listen, attack. Aaron, it's just, as I said it, the characters are not made in crisis. They're exhibited. You have to go out there, exhibit your talent. You have to showcase your talent. That's what makes you you. I mean, there is many other cricketers in the world. How many superstars do you have?
How many chain ones that you have? Because whatever the situation get tougher, he's going to become a bigger cricketer. Yeah. That's what you need to do. The situation is get so big now, and you're in a deep, dark place right now. There is no light end of the tunnel. Pakistan is stuck. Hey, listen, captain needs to come out. What kind of characters do you have? And that's all I'm asking for. And that's what we want to talk about for in 11:30 at night. That's what I'm looking for. That's what he's looking for. That's what he's looking for. What kind of characters we need to see today? And this is the personalities. This is the test of the personalities. It's not the cricket. It is how you are. Yeah. Hey, show me. We know that they're brilliant and we know what they can do. But you talked about the in-form fast bowlers and we know कि उनसे हम क्या expect कर रहे हैं, शाहीन, नसीम and Haris. आमिर के ऊपर आपका इस मैच से पहले because last game that super over we all remember. तो जब आप थोड़े down and out होते हैं. मेरी बात सुन. मेरी छोटी बहन, इन सारों ने मैच जिताए हमें. इन सारों ने अच्छी बॉलिंग की हुई है. नया बॉल सारे करना जानते हैं, पुराना डिफेंड करना जानते हैं. ओवर उसने मैच आपको वापस लेके 15 रन दे देना आमिर ने आपको. और क्या करता वो बेचारा. अब उससे आखिर में नहीं हो पा रही. दैट्स फाइन, ठीक है. ये चारों हैं ना, कर चुके हैं. आज कैप्टन को हौसला देना है, हौसला रखना भी है, हौसला देना भी है. आज सामने खड़ा होना है. तुम मेरे पीछे, मैं तुम्हारे आगे. रिलैक्स. All pressures on me. You guys relax. Chill. You see, this is 25 crore banda dekh raha hai. There's a huge population. There is approximately 2.5 billion people are about to watch. And CNN is saying documentary for the first time 1844 to 2024. A few miles down the road, USA was playing Canada. And now the Pakistan, India is playing in America to promote that game. Now they're taking the baseball out of every country now. Now for the first time, the cricket has landed into the America. Why? For this game only. Hey, listen, people are looking up to you. Just win it, for heaven's sake. That's all I ask for today. And talk about people that we look up to in terms of the Pakistan team. All eyes are going to be on that opening partnership for Pakistan, the most prolific ever in T20s, of course, Babar Azam and Mohammad Rizwan. I'll come to you, Yunus Bai, first, and then I'd love to hear your thoughts too, Hafiz. But how important are they? How do you think they'll go in these conditions as well? It's a trickier wicket, we know for sure, with that drop in, that uneven bounce. Perhaps more conventional cricket and really grinding through that new ball to allow yourself to open up, like we saw in the Netherlands-South Africa game yesterday. You know, we saw once you got through the power play what the experience of David Miller with the youth of Tristan Stubbs was able to do. What are you expecting from Rizzy and Bubba today, and how important are they in this particular match? Well, I would like them to play the way they play, because normally in T20 matches they used to bat long, they used to take more balls. If these two will take more balls, Pakistan should win the game. So today is the day when whatever way you play in the last 3 years of your cricket as a opening pair, this is the day to deliver once again. If they will take that 10 over or 12 over within them, like 40 balls each, Pakistan is going to win the game. But if they will get out early, Pakistan could be under pressure, because you know these. What if they play 60 balls each, have 40 ball each, and they score 40 runs? No, this is what they like. I feel if you take 40 balls, and normally that is the problem with Pakistan most team of the now. time. No. Fizzy. Problem is then the power play. Yeah. That's the same question I asked Master Gupton. We are तीसरे number पे नीचे से. But That's all I'm asking for. But conditions are tough. I agree with you. No, but on tough condition, I want them to play 40 balls. No, but these conditions are suitable for both of them. I think it because suits we are them not better. going for 180 runs. We just only asking from That's what them you- 140 Today is the day to score runs. 140 So on that's the means board. 7 runs per hour, and they are expert on that. The stat shows us that they are good on that. But so आपके आज opinion विकेट में- मुश्किल है ना, इसलिए आप कह रहे हैं. आज विकेट मुश्किल आप today इसलिए कह is रहे a हैं. tough Thank you. condition, so तो they बताओ can ना, settle बताओ. their nerve. They are the best pair for us, for not for only last 2-3 years. That's from last 4-5 years. They do these kind of job plenty of time. If they play like 12-13 overs and score something like 100, we are in good shape. And then our power hitters come and they have that 40 or 50 more runs. मैं इसी पे For आ रही sure, थी. One down Indian will be on आपके backside. One down फिर कौन आ रहा है आपके 11 में? देखिए उस्मान ही को खिलाएंगे, जाहिर सी बात है कि देखिए आइडियली अगर मैं हूँ ना, अगर मैं कैप्टन हूँ तो
उनमें से एक वन डाउन आए बाबर आजम से और मोहम्मद रिजवान से, क्योंकि अब तो ये फ़खर ज़मान ने तो ऊपर आना नहीं है। हम बार बार ये कह चुके हैं राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा होता है। और आज क्या बात है, अगर चैंपियन ट्रॉफी आप भूल गए, 100 किया था फ़खर ज़मान ने, बिग हीरो आज भी हमें याद है वो। तो ये तो अब नहीं हो रहा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही आ रहे हैं। बड़ा आइडियल होता है कि इस उसमें हम क्या करते हैं, उस्मान को ओपन कराते। और एक और पॉइंट मैं ज़रूर यहाँ डिस्कस करूँगा कि जो भी प्लेयर आता है टीम में उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना यूनुस खान को, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करना मोहम्मद हफीज़ को, उसको ये कहना कि भाई आप भी अपना गेम खेलो, हफीज़ साहब आप भी अपना गेम खेलें, और यूनुस खान आप भी अपना गेम खेलें। वो गेम खेलें जो टीम के लिए बेनिफिशरी हो, जो बैटिंग के लिए बेनिफिशरी हो। अगर आप साइम अयूब को ये इसलिए टीम में डाल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा स्लो खेलता हूँ, रना बॉल खेलता हूँ, तो वो आके थोड़ा सा इंटेंट डालेंगे और मैं उसी तरह अपना खेलता रहूँगा, तो भाईजान ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है। This is not a franchise cricket. So franchise cricket need from you that you just go there, play 20 hours, make 100, and then you all the sponsorship happy from you. It's not like that. So make sure कि जो भी प्लेयर जाए उसको यही मैसेज क्लियर जाए कि चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, चाहे वो साइम अयूब है, चाहे वो उस्मान खान है, चाहे वो फ़खर ज़मान है, ये सिर्फ टीम के लिए नहीं खेलेंगे। फ़खर ज़मान आगे पहली बॉल पे छक्के नहीं मारेंगे भाई। आप अगर पावर प्ले में खेल रहे हो और आपको थोड़ा सा रूम मिलता है तो आप कवर में ड्राइव क्यों खेलते हो, कवर में एक्स्ट्रा कवर में छक्का क्यों नहीं मारते हैं? अगर हल्के सा बैक ऑफ लाइन बॉल पड़ती है, हफीज़ भाई को दो आज हम रिटायर, हमें हल्का सी बैक ऑफ लाइन बॉल मिलेगी T20 में, तो हम मिड विकेट और स्क्वायर के ऊपर छक्के बजाएंगे, ना कि उसको सिंगल लेंगे। तो ये वो इंटेंशन, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रूम मिले तो भाई छक्का तो मारो ना यार। अगर वो बॉलर आपको ऑफर कर रहा है तो मारो भाई। तो बस सिर्फ सिंपल से ये थ्योरी है बस। Now they'll be hoping for every one of those 50 partnership that Baba and Rizwan always seem to put together. That's what they average at the top of the order for Pakistan. Off to a very short break here, but as you can tell, there is so much still to unpack. In anticipation of the biggest match of the tournament, it's India taking on Pakistan. Off to a short break on Vantage Developers presents Game On. Hey, see you very soon. Ji, welcome back to Vantage Developers presents Game On Hai. We're building up to the big game. It's India versus Pakistan at 7:30 p.m. Pakistan time, live on PTV Sports. We will be sharing all the live visuals and updates as we get them from New York City. But so far, the buzz has been great. हमारे जो guests हैं उन्होंने बहुत जज्बात जगा दिए हैं to be honest, patriotism के, और वो सारी खूबसूरत बातें जो आपने अभी ब्रेक से पहले सुनी, और अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हम यही बताते चले कि हम बिल्ड अप कर रहे हैं टू द बिग वन. इट इज़ द सुपर सेंसेशनल संडे. आई हैव गॉट my wonderful panel and my wonderful beautiful co-host with me, and we can't wait to see where this match takes us and how it ends tonight, because हमने बात यही की ब्रेक से पहले भी कि जो भी टीम जीते, कोई भी हारे कोई भी जीते, in the end of the day it should be a competitive game from both sides, because दोनों sides जो हैं वो एक top quality T20 sides हैं. We have seen what they can do. But Professor, coming to you quickly now, because you talked about the bowling before the break. अगर हम अब ओपोनेंट की तरफ थोड़ा सा आएँ, अगर हम उनके लाइनअप में देखें, एक नाम जो हमेशा आउटशाइन करता है वो है विराट कोहली, किंग कोहली एज ही इज नोन, एंड ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान. ही हैज़ एन एवरेज ऑफ 81 इन T20s अगेंस्ट पाकिस्तान. अब ऐसे जायंट को आप कैसे अनसेटल करेंगे, स्पेशली इतने बड़े मैच में जब हमें पता है कि वो प्रेशर में कितना खूबसूरत खेलते हैं. देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि विराट कोहली के इस जोन में पहुंचने में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंसेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. किस जोन की मैं बात करूं जहां पे लोग उनको आइकॉन मानते हैं, किस जोन की बात करूं जहां पे वो किंग के तौर पर कहा जाता है. नाम देखें कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस हैं ना वो बहुत शानदार है. विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो एक, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे सम टाइम फील होता है कि उसके दिमाग में एक ऐसा कंप्यूटर फिट है कि वो सिचुएशन को इतना अच्छा रीड करता है और अपनी बॉडी से ऐसा अच्छा रिप्लाई करता है
कि वो कंडीशन के मुताबिक खेलना शुरू कर देता है। मैच अगर 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 पिच की कंडीशन ग्राफ्टी क्रिकेट खेलने के लिए तो ग्राफ्टी खेलेगा, कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करेगा, अग्रेशन शो करना तो अग्रेशन से खेलता है। लेकिन ओवरऑल इसकी जो इनिंग्स है वो ऐसी होती है कि डोमिनेशन की तरफ जाता है, डोमिनेट करने की तरफ जाता है, मैच जीतने की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर सिचुएशन में अच्छा खेलती है। हमें क्या करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि इनकी क्वालिटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज समथिंग जहाँ पे एक बैट्समैन स्ट्रगल करता है, उस एरिए को, उस पॉइंट को स्ट्रेट अवे हमने जो है हिट करना है। शाहीन के खिलाफ ही वाज नॉट कंफर्टेबल, नसीम के खिलाफ ही वाज नॉट कंफर्टेबल। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने इन दोनों बॉलर्स के साथ अटैक करें और इनके आउट करने के लिए जो टॉप ऑफ स्टंप की एक लाइन है जहाँ से वो अक्सर वो बिहाइंड द स्टंप आउट होते हैं, उस एरिया को अगर हम हिट करते हैं विद द बॉलिंग ऑफ शाहीन, विद द बॉलिंग ऑफ नसीम शाह, तो मुझे लगता है इनको जल्दी आउट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा चांस है। और अभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या है कि पहले ये नंबर 3 पे आते थे, अभी ओपन कर रहे हैं। तो जब नया बॉल की जो शार्पनेस है उसके साथ इनको जो मैनेज करना हो सकता मुश्किल हो जाए, तो इन कंडीशन के अंदर नया बॉल खेलना वैसे भी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अगर शाहीन और नसीम राइट एरिया हिट करते हैं तो विराट कोहली और शर्मा को उतना ही मुश्किल में डाला जा सकता है। लेकिन अगर ये अपना वो पीरियड गुजार लेते हैं, बिकॉज ही इज़ अ टेक्निकली वेरी सॉलिड प्लेयर, टेक्टिकली बड़ा सॉलिड है, अगर ये वो पीरियड गुजार जाता है तो फिर विराट कोहली फिर उसी जोन में चला जाता है कि जब आपके पहले 5 और 10 बॉल के अंदर आपने अपनी वो जो नर्वस एक थोड़ा सा आपके बॉडी के अंदर मौजूद होती है नर्वसनेस, अगर उसमें से आपने ओवरकम कर लिया तो फिर प्लेयर लाइक विराट, प्लेयर लाइक रोहित, दे कैन डिस्ट्रॉय यू नो मैटर विच कंडीशंस यू आर प्लेइंग ऑन। तो मुझे यही, मैं ज़ाती तौर पर एज ए पाकिस्तानी फ़ैन या पाकिस्तानी बॉलिंग के अच्छा करने की जो एक मैं जगह ढूंढ रहा हूँ वो ये है कि नया बॉल पहले 3 ओवर में कैसे ऑपरेट किया जाता है। अगर पहले 3 ओवर हम लोग वेवर्ड हो गए या राइट एरिया हिट ना किया तो ये इतने सॉलिड प्लेयर हैं, इतने मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं कि ये आपको जो है वो फिर उसको रिप्लाई करके आपको जो है दबा सकते हैं। हफीज़, मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे लेके चलूँ। Yeah. ये दोनों बैठे हुए हैं, मार्टिन में बैठा, पूछ लें। 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक प्रेशर सिचुएशन से बच रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, हम पे ना आए। विराट कोहली प्रेशर सिचुएशन ढूंढ रहा होता है कि मैं इसमें घुसूं। पूछे क्यों? क्यों? सुपरस्टार बनना है। क्या बात। वो मैच मेलबर्न वाला ढूंढ रहा था, 1.5-2 साल से रन्स नहीं हुए। बैट्समैन है ना यार, सारा टाइम थोड़ी रन्स करेगा। वो मैच ढूंढ रहा था, अल्लाह ने करा दिया। ये 2 ही तरह के प्लेयर हैं, एक बच रहा है, एक अपने आप कह रहा है अगर मैं इस सिचुएशन में फंस गया ना और मैं इसमें कर गया तो मैं सुपरस्टार, दुनिया मेरी, पैसा मेरा, माल मेरा, नाम मेरा, सोशल मीडिया मेरा। ऐसे ही है ना। एक कहता मैं अपने 40 करके साइड में हो, बाकी देखा जाए। एक्चुअली किस्मत भी उन्हीं को फेवर देती है जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आओ जी लाओ सिचुएशन, ये बैठा हुआ ना यूनुस खान, ये देख लो, ये प्रेजेंट किया ना इसने आपको। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ये T20 फॉर्मेट का प्लेयर था ही नहीं, वनडे नहीं खेला जा रहा था, ट्रांसफॉर्म किया, वनडे प्लेयर बना, T20 कप्तान बना, प्रेजेंट किया अपने आप को। अल्लाह ने कहा ओके यू नॉट बिल्ट टू डू दिस, तुमने कोशिश की, वेट तुम्हारी लेगसी छोड़ के जाते हैं। क्या किसी को नहीं मिली? T20 फॉर्मेट के यूनो से बड़े प्लेयर आए कि नहीं आए? रज़ाक या शायद हफीज से बड़ा T20 प्लेयर पावर हिटर कोई है आपके पास? या हफीज बैठा हुआ है। हफीज से ज्यादा कोई इस जैसे प्लेयर डेवलप हो सके आज तक माशाल्लाह। इसके बाद ये तो बेचारा नसीब से मिल गया हमें। वो बॉलिंग भी करता है, अच्छा बैटिंग भी करता है, अच्छा ओपन भी करता है, फील्डिंग भी कर लेता है, अच्छा फील्डिंग भी कर लेता है। चल ले आ। ये तो इस तरह सिस्टम डेवलप हुआ है। लेकिन जब इसने प्रेजेंट किया अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में, अल्लाह ने क्या दिया? ये ले जी कप। यूनुस खान साहब, आपको हम 2007 में नहीं लेके जाएंगे, 2009 में आपको हम वर्ल्ड कप देंगे। चलिए 2007 में हम रनर्स अप थे और हाँ। 2009 में हमने ट्रॉफी लिफ्ट की। अब 2022 में भी हम रनर्स अप रहे हैं, तो क्या इस बार भी हम ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे? अच्छा ट्रेंड है, बट वी कैन ओनली होप। Well, it's wonderful words, and I can't wait to get the deep dive from Roha and exactly what was just going on there. But it sounded really passionate and emphatic. But one thing that I wanted to draw attention to in this particular match is the fact that other than Virat Kohli, who is exceptional, he's one of the 3 bigs who are all featuring today, have all scored over 4,000 runs in this format of the game.
is his partner in crime, his captain, Rohit Sharma. Rohit's come out and he said that the one thing we know for sure in our batting lineup is our opening partnership will not change. So expect to see him straight out to bat with Virat at the top of the order. But Yunus, in terms of matchups, Rohit, as fantastic and incredible that he is and consistent, he doesn't match up well against Pakistan. So I've got a graphic here that I want to throw up now, because if we don't, in terms of strike rate, in terms of average, in terms of runs scored, look, Pakistan is down the bottom there. He only averages 14.25, strikes at 118. Yes, he's off the back of a brilliant 50, albeit that was against Ireland a few days ago in the same circumstances and the same wicket. But what are you expecting about Rohit today against Pakistan, and why is it that he's so weak against the Pakistani bowlers? He's a match winner. Everybody knows he's a leader. He's a fantastic leader. He performed everywhere. But that technique of him against the left-arm fast bowlers, Mohammad Amir and Naseem Shah, they were the guys. They exposed him. Look, first over, if the ball came in from that off stump, middle stump, he struggled big against us. So that's why he not perform against us. But we all knows that he is a match winner. He is a cool customer. He knows how to play under the pressure, and he's a fantastic captain. So I hope that he learn from mistake, and especially in this pitch, because there is a bounce. So maybe he's not struggle much, because sometimes when the on the low pitches, that ball is seaming or swing, it's get low. So you have more chance to get out on leg before. But I think he will be work on his technique, and he will be good, I think, in this game. And as a captain, Roha, I've been loving the psychological warfare that's been happening in the press conferences as well. There was one that was making waves where he said, well, we've got 1.4 billion people, not saying that we're tougher, but, there's a lot of people that have to fight their way through to get to this national side. We're very mentally switched on, and it really feels like he's up for the challenge today for this contest. I don't think by any means he's taking Pakistan lightly. He knows, probably because of his own form against the side as well. There are always words being exchanged around every India-Pakistan game. We see the players also exchanging some words. We remember what Hardik Pandya said in the last World Cup when, of course, Pakistan lost from India. But I'm going to come to you, Gaptil, with Pandya's importance in this Indian lineup. We know what he can do with the bat down the order, and he creates that perfect balance. But with the ball, he loves bowling against Pakistan as well. His stats in T20s against Pakistan show us that he's taking a wicket almost every 10th ball. So how dangerous is he when it comes to facing, especially on a New York surface? Yeah, he's one of those bowlers that's got a bit of a golden arm, a bit like Corey Anderson was for New Zealand at his time. He just seems to, whether it's, the batters get through, Bumrah and Arshdeep Singh in this case in this World Cup, and then it's like, Hardik Pandya, he might give us a few bad balls. Do they then, the concentration just have a little bit of a lapse? But look, India versus Pakistan, it's always, everybody gets up for it, and Hardik will be, the same. He want to take wickets. You see there, we sky ball. But yeah, I mean, they look like they just wanted to take him down. They must see him as a bit of a weak link and look to go after him a bit more. Is there a way they can do that slightly better in this game if they do see him as a weak link in the Indian bowling lineup? Try not to give him those wickets and take him for maybe 8 and over. That might be a win for Pakistan in this game on this wicket. Yeah, he hasn't been bowling a hell of a lot with injuries in recent times, but he was brilliant in the first game for India. He'll be looking to bounce again. Something crazy against the Pakistan lineup. He's definitely an integral part of the cog of the lineup for India if they are to get up above Pakistan today. But it's that time of the show, Roha, when we like to give out a couple of prizes. So here's the questions. We've got 3 different sections for you today where you can win big. And the first one is from our friends at Cheesiest. They've been supporting the show. We absolutely love their family deals, and they want to give you the chance to win one by simply answering the question, who scored the first T20 international century? Can see Hafiz shaking his head. I think he knows the answer. That question is answered via that number on your screen. Give us a call. Let us know. This isn't just the only thing up for grabs in today's show. Like every day, actually, we've been very generous. Our sponsors have been very generous so far. But a big plot to win for you in the Shuaib Akhtar block of Blue World City, where
myself and Erin have already called dibs, so we'll do back to you on that, Shoaib. Maybe you can be my neighbor. But Blue World City जी आपको plot दे रहा है Shoaib Akhtar block में. If you know the answer to this question, सवाल बहुत आसान है. What is the highest score of Martin Guptill in T20 internationals? Well, if you know the answer to that, आपने Blue World City के Facebook page पे जाके इसका जवाब देना है और आपको plot मिल सकता है from Blue World City. And our last prize of the day up for grabs is, thanks to our lovely friends at Al Karam, you can win a gift pack that's full of perfumes, dresses, you name it, plenty in there, thanks to our friends at Al Karam. And that is by participating in our predictor of the day question. It's very simple. Who's going to win today? That is how simple it is. All you have to do is answer that question. Just vote now and comment hashtag Alkaram, hashtag Game on Hair to win exciting prizes. All of that on any of the PTV social media channels. Guys, plenty of prizes, plenty of action. Am I eligible to answer that? I don't see why not. Who's Yeah. going to win today, Roha? Pakistan, I think. There we go. Off to a very short break here at Game on Hair, presented by Vantage Developers. Of course, all the live action build up on the other side. Toss, playing 11, pitch report, you name it. We'll see you very shortly. जी, welcome back to Vantage Developers presents Game On Hai. We're building up to India versus Pakistan in New York City. We will be counting down to the toss and the playing 11, all of the live visuals. And as the stadium is filling up with all the fans in blues and greens, it's time that we go and see what that New York surface will offer us today, because a lot was discussed. A lot of things were said, a lot of articles have been coming out ki kya hogi pitch, uneven bounce, all of that stuff going around before the match. So to put all those questions to rest, let's go to Steve Smith and Ebony Rayford Brent, who's there with the pitch report. Yeah, we've just seen the pitch report there from Steve Smith and Ebony, and surprisingly, pitch two, so back-to-back games on that wicket yesterday. Was a little bit of chat in the media about whether or not it would be 2 or 4. They've gone the way of 2. Shoaib Akhtar looking at the cracks on that deck there as well. What are you liking about that wicket? Well, Guppy was saying to me, it's reminding us Wanderers, Joburg wicket. It's a 2-pace wicket. It's 2-tone wicket. Winning a toss, bowling first, obviously. If nothing can bring Pakistan back into the game, but this pitch does. So if you win the toss, India is going to be in tremendous pressure. Yeah. The only people who can take us to the out of this whole mess, I think is the pace battery. I think India can collapse. We have seen India collapsing against our fast bowlers. 2 left armers, Amir, Shaheen, can do the wonders. Then they can create the magic. और मैं समझता हूँ कि Pakistan is back in the game because of the atmosphere, overcast, cloudy weather, seaming track, and plus the place battery. Pakistan is now, if you ask me, I'll be very genuine. Pakistan is a winning contender of this game. Ooh, I think Roha as well, as an Aussie that's looking forward to a wonderful game of cricket today. It's something about Pakistani fast bowlers on that wicket actually gives me goosebumps, and I've got nothing to do with playing on it today, but the fearsome pace, that mix of left and right quicks as well, and that all in all, which we're not sure yet, we haven't seen the playing 11, but potentially 4 and out and out paces. And of Lot to course, you look know, forward combine all of that, Erin, with of course the overcast conditions. It will be an ideal pitch to bring in your seamers, especially in that power play, I create see that an umbrella. impact. What is that? Put that away, sir. I That's- don't want to see that anywhere. That's just prep, because as I said earlier, there is a slight chance of rain around 10-11 local time, but we'll come back to that. Mari, win the toss, bowl first, that's what all the experts are saying, but because we saw 104 being chased by South Africa yesterday over here, what will be a safe total for whatever team is batting first, a challenging one to really create that tension in the game?
probably about 180. No, look, obviously every game that's been played there has been one chasing. They haven't been easy chases, but the teams that have chased have managed to get across the line. So if you can get up to around the, between 130, 140, I think the wicket's only getting better. I think the preparation that's been done on it has improved the standard of the wicket, which is fantastic for cricket being played there, because there's still another 2 games coming up there in the next 2 days, I think. So more cricket, better preparation can only mean higher scores. Yeah, it looks like a really interesting wicket once again for the batters to contend to. A little bit green, a few of those cracks. Steve Smith said that 6 to 8 metre length would be where bowlers would be looking to exploit. Did you read that from what you saw from the screen? बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्योंकि हार्ड है पिच, और लेकिन अच्छी बात है कि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं इस पे, तो मुझे लगता है कि थोड़े से रन होने चाहिए अराउंड 140 150, क्योंकि जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है तो प्लानिंग भी होती है, उसके बाद उसके स्किल्स की एग्जीक्यूशन भी सामने आ रही होती है। तो मैं आई होप के अराउंड 150 हो, और मैं चाहूँगा कि इंडिया भी एक चेंज करे आज। जो उनके 2 ऑलराउंडर खेलते हैं, शुमिन दुबे और अक्षर पटेल की जगह इनमें से एक खेले, और साथ में कुलदीप यादव खेले। कुलदीप यादव जब भी खेलते हैं हमारे पास, हमारे अगेंस्ट, तो हमें ट्रबल करते हैं। तो मेरे अगर वो स्मार्ट में भी मुझे लगता है कि उनको एक वो करना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है, तो आज़म खान क्योंकि पिछले मैच में कीपिंग नहीं की, तो वहीं से हमने ये बात की थी कि हमें लग रहा है कि आज़म खान नेक्स्ट मैच में नहीं होगी, इमाद वसीम आए। और ऐसी पिचेस जहाँ पे ठीक है ज़्यादा ब्रेक या टर्न नहीं हो रहा, लेकिन विकेट टू विकेट अगर आप बॉलर्स बॉल करते हैं, ख़ासतौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, तो उनके लिए भी काफ़ी चांस है कि आउट करें। और जो हमने महाराज को देखा पहले मैच में, जब उन्होंने जहाँ विकेट टू विकेट अगेंस्ट श्रीलंका बॉल किया, तो उनको विकेट मिली। तो मेरे ख्याल से ये एक चेंज बनती है। लेकिन आई होप कि अच्छा मैच हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब इस विकेट पे रन्स होने जा रहे हैं, और बस बारिश ना हो। बस बारिश ना हो क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, बारिश होगी, एडवांटेज है कैप्टन्स के पास। लेकिन अगर आप बैटिंग भी कर रहे हो, खासतौर पर जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही है, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को चाहिए कि अपना टाइम लें, और वही वाली बात जो है, आज वो अपना स्किल्स दिखाएं, गेम दिखाएं, अपना टाइम लें, लेकिन फिर खत्म कोई इम्पैक्ट भी करे, बिकॉज टाइम ही ले रहे हैं। इन दोनों बैटर में से एक खेले आखिर तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज 100 कर दें, आज वो ठीक है 50 बोले 60 बोले खेल लें, 70 रन कर दें, लेकिन उनके इर्द गिर्द राउंड जो है 70 रन और हो जाए, तो क्या ही बात है। प्रोफेसर, हमने अक्सर ये मैच के पाकिस्तान के हारने के बाद अक्सर जब कैप्टन बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वी वर 15 रन शॉर्ट, वी वर 20 रन शॉर्ट। बाद में रिफ्लेक्ट जब करते हैं, आज इस पिच पे अगर हम 15-20 रन शॉर्ट ही रह गए, तो ये तो एक मैच डिटर्मिनिंग फैक्टर बन जाएगा, बिकॉज इस पे हम बाद में रिफ्लेक्ट करके वी हैव टू बी हेड ऑन एंड पोस्ट अ चैलेंजिंग टोटल। बाद में फ़ायदा नहीं होना कोई रिफ्लेक्शन का। देखिए 15-20 रन शॉर्ट रहने वाला जो है ना, वो कंपनी की मशहूरी के लिए किया जाता है। तो उस पर तो ना ही बात करें, तो आगे चलते हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। आपने देखें ये जो पिच है ये ऑलरेडी यूज्ड है। यहाँ पे जो वेरिएशन है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि अगर एक पिच पे ऑलरेडी पिछला मैच हुआ हुआ है, डेंट उसके बॉल के डेंट्स पड़े हुए हैं, फुट मार्क्स पड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी वेरिएशन सामने आएगी। तो हाई स्कोरिंग गेम तो नहीं नज़र आ रहा। जो भी बैटिंग करेगा, अगर वो 140 ऑन द बोर्ड लगा देता है, पाकिस्तान हो या इंडिया, तो उसके हारने के चांस कम हो जाएंगे, उसके जीत के चांस बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान के अगर मैं कम्बिनेशन में एक न्यूट्रल होने के नाते मैं अगर वैसे पाकिस्तान ही मैं चाहूँगा पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ, इस पूरे मैच को देखूँ, तो राइट कम्बिनेशन है इंडिया के पास। उनका जो चौथा फास्ट बॉलर है वो पूरा बैट्समैन है, उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो पूरा बैट्समैन है। मैं जडेजा की बात कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूँ। उनका जो बैट्समैन है डुबे, वो साथ में मीडियम पेस कर लेता है इफ़ रिक्वायर्ड। हमारे पास उस तरह के राइट कॉम्बिनेशन की जगह नहीं है। हमने 4 फुल पेसर खिला दिए, लेकिन अभी तक वो 4 के 4 पेसर हमें इम्पैक्ट नहीं डाल के दे रहे, हमें मैच नहीं जितवा के दे रहे। तो हम एज ए कम्बिनेशन, एज ए टीम, अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान का राइट कम्बिनेशन नहीं बना हुआ इस टीम के अंदर, राइट फॉर्म नहीं है। इस मैच को खेलने से पहले कोई भी चीज़ इस वक्त तक पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, लेकिन यहीं पे हमने बहुत सी मरतबा उठ के दिखाया था। बहुत सी ऐसी, जैसे ICC जो हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, हम लोग 8वें नंबर की टीम थे जब हमने उस टूर्नामेंट में गए, लेकिन हम पहला मैच इंडिया से हारे। लेकिन वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज है ना, वो वहीं पे आती हैं जब आपके कैरेक्टर्स को चैलेंज किया जाता है। तो ये एक टाइम है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी फेवर में नहीं लग रही, स्टैट्स आपकी फेवर में नहीं है, फॉर्म आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन आपका जो दिन है वो आप अपना बना सकते हैं बाय टेकिंग द अपॉर्चुनिटी पॉजिटिवली। Right, a lot of inspiring words there, but of course
we were talking about the difference of giving that cushion of extra 15-20 runs to your bowlers to bowl at, because so far we have seen Pakistan struggling with getting a challenging total on board, Erin, and the bowlers, they put in their 100%, but in the end, of course, those few extra runs would have created that cushion for them to defend properly. Yeah, and we're in really interesting circumstances here, being in New York City. 137 actually was the only time that a score's been defended, batting first, and that was Canada against Ireland, the associate nation doing it over the test playing nation in Ireland in that particular instance, but very, very low scoring affair. We'd have to assume with the toss, which is imminently about to take place, should a captain win the toss, they would elect to bowl first. But I mean, you just never know. This T20 World Cup has just been full of firsts and so many upsets, Roha. It's been so wonderful to see. I think we're all waiting with bated breath to see exactly what happens with this toss. No doubt Ravi Shastri will be officiating it. I love a Ravi toss, don't you, Roha? We all love a Ravi Shastri toss, but we'll do that bit of Ravi Shastri whenever he comes back on screen. But of course, guys, building up to the toss, the excitement, the roar that we're about to hear on that screen from that crowd, we're all ready for that. New York City, are you ready? If he doesn't say that, I'll be very disappointed. but prepare for a maddening noise. Madi, you're sort of new to the broadcasting experience, but building up to this game, what are your expectations of that crowd? Because of course, it's going to be a very important factor going in. Well, we all know that it doesn't matter if you're playing in India or Pakistan. When there's cricket on, there's noise. I've played in Wankhede Stadium. I've played here in Pindi. Noise. It's just, that's all there is, and there's going to be no different here in New York. It's if it is full like it's supposed to be, it's just going to be loud. The guys aren't going to be able to hear each other out in the middle. Running between the wickets could be interesting. Hearing each other call, but it's going to be a great atmosphere. Sort of wish I was there to experience it, to be honest. It'll be some good fun out there, I reckon. Absolutely. The buzz, the electric atmosphere, it's going to be wonderful. And that's what this T20 World Cup was all about, Roha. It was bringing cricket in its biggest, loudest, brashest, most competitive form. And this game is it. This is the rivalry. This is the game everyone has been speaking about for months and months and months on end. You can't get your hand on a ticket. They're worth thousands of dollars now, Roha, which is why we're so glad we can bring it to you live across PTV Sports, of course, to get you as close to the atmosphere as you can, and we'll be keeping you updated with everything that's going on in our dressing room for sure, with our fears and our feelings and our nerves. But Erin, as an Aussie, I'm sure you're used to seeing, of course, what it means, because when Australia play England, especially in World Cups, and of course the Ashes, you're used to this rivalry. But which rivalry would you pick as your favourite? I think, Ashes rivalry is incredible. There's absolutely nothing like it. We love to hate the English. There's no beating around the bush. I think love the honesty, right? It's just true. We love it, and I thought that's what was so wonderful about the game in Barbados, is obviously being so close to England versus Australia. The Barmy Army were out there in force, and you saw when Glenn Maxwell took that absolute screamer, that running catch. He turned around and he was like, "What are you going to say about it now?" I loved the absolute, competitiveness of it, but let's go into the mindset of this huddle that's happening right now, Shoaib. Who is speaking here? There's Wahab Riaz there. Rizzy looks like he's leading a prayer there, having a chat. What's happening in this moment? What are they saying? What are we saying? Just win the game. Just the last minute pep talk, and obviously Ahmad Wasim is taking the lead, और ये बता रहा है कि guys, let's make it happen. Yeah. And he's not slowing down. He's going to keep on going, and he's also given a cap to Wahab Riaz. For what? Wahab is playing today? Wahab's back in the squad. What's going on here? Going in with 5 seamers, I guess. Special cap he has been presented. And I don't know what cap is. we're just getting word as well from the ground that the toss has been delayed 10 minutes. There'll have to be a little inspection. Obviously, a little bit of that barish that we're worried about has come in from around the ground, but all the weather reports do suggest that it was fleeting, as you mentioned, Roha. Nothing too serious, but it has delayed the toss for now, which gives us a little bit more time to ponder. Now that we've seen that deck, I'm just wondering, Guppy, I'll come to you because you're the least likely to be swayed by any allegiance, obviously, and patriotism. But looking at that deck now, does that change your playing 11 from last game? I don't think so. I think you still have to go the 4 seam bowlers, and we know that Ahmad is in contention to play. I think
with the impact that the spinners have had on this wicket, I think it's a good option to have him in the side. And I think probably at the expense of Azam Khan. I know that Azam Khan is a special player and I know what he can do. I just think they want some consistency with performance. So I think you can leave Shadab there at 5. I think that's a really good call. And then Imad can drop in at 7 or 8 and play that finishing role like he did so well in the PSL towards the end. We can't wait to see how the rivalry unfolds today on ground. But Shoaib, I'm going to come because you have experienced this this rivalry, but also this cross-border love, that you get from your Indian fans. And a lot of Indian fans love a lot of Pakistani players. We know Boom Boom Afridi has enjoyed his own fan base. और likewise उनके players की भी यहाँ पे बहुत मोहब्बत है, उनके players के लिए fans हैं. और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? Because it's not just about the differences, it's also about the unity that cricket brings between these two countries. Yeah, I mean, India celebrates talent. They enjoy the talent. I'm very thankful that kind of love that I get across the border. I was showing my analytics to Guppy, so India is exceedingly far ahead. But it is vice versa. Very important that I always believe there is the greatest player of all time, which I was up against. It was Sachin Tendulkar. There is no comparison. It's as simple as that. The era was difficult. There was Vaughan, there's a Wasim, there is Waqar, and in the late 90s, then the poor guy had to face one of the fastest in the entire history. Brett Lee, Shane Warne, myself, Tate, everybody, and the way he navigated. I mean, he is one of the, I think, the best thing ever happened to India, which is Sachin Tendulkar. And plus, I really think that this time around I felt a little bit comfortable feelings that from across the border, which the very respect for each other, and obviously I can see some kind of sensibility coming out from the both media houses that they're appreciating the talent of Virat Kohli, everyone, and there's a big guy, Chris Gale. Universe boss. Look at those. Oh, he's that wearing like hairstyle. Indian color, is he? He is. Yeah, he's wearing Indian color. He is some guy, man. He's some guy. Man, this is a guy who actually can turn around everything. He is the greatest player of all time. Only if you realize it, because he's the one who can navigate this situation so easily, better than anybody else on this today. This is true. Because technique, his technique, he plays very late, and this is a guy who's a doer. And No, you I showed think that he's half India, half Pakistan, if Yeah. I'm taking it Yeah, it is, correctly. it is. आधा दोनों की Yeah, neutrality yeah. दिखा रहे हैं. He did that, I Pakistani think. has half Indian. One yeah. arm is And Indian, one arm all is the Pakistani. players are वर्ल्ड standing बॉस on कहते हैं his जी shirt. इनको, वर्ल्ड बॉस है तो फिर ये तो करेंगे. Lovely मैं characters. इसी पे आपकी तरफ यूनिस आऊंगी. दोनों तरफ जितनी जी, ऐसे ही. राइवलरी और कंपटीशन है, उतना प्यार भी है फॉर ईच अदर्स प्लेयर्स बिल्कुल और ऐसे उतनी ही है. एप्रिसिएशन भी है, जिस तरह शोएब बिल्कुल ऐसे ही. देखें, जब इंडिया को टूर किया और कहीं बाहर जाने को हुआ तो विद इन मिनट्स, सेकंड्स बल्कि मैं कहूँगा 20-25 हज़ार लोग आ गए वहाँ पे. क्या सबसे बाहर ज्यादा हुआ किस ऐसे. प्लेयर के पीछे आते थे लोग? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है. सब प्लेयर्स के पास जैसे ही हम कहीं भी जाते थे तो वहाँ पे जो स्टार्स की जो वैल्यू है ना, बहुत ज़्यादा. ये मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में नहीं है. हम भी अपने प्लेयर के साथ बहुत लव करते हैं. और इसी तरह है कि जब इंडियंस प्लेयर यहाँ आते थे तो उतने ही अटेंशन मिलती थी, उतने ही रिस्पेक्ट मिलती थी. और क्राउड में भी ऐसे होता था. जब वहाँ हम जाते थे, परफॉर्म करते तो उनको पता होता था कि ये प्लेयर्स परफॉर्मर्स हैं, तो वो उनको पूरे सपोर्ट करते थे. और इसी तरह जैसे पाकिस्तान में जब वो आते थे तो इसी तरह हमारे भी फैन, उनके भी फैंस यहाँ होते थे. लेकिन अच्छी बात यह कि इन दोनों मुल्कों में जो क्रिकेटर्स हैं बहुत ज़्यादा, जो आप कह सकते हैं ना कि वो Passionate. बाजू का गेम से भी बढ़ा देते हैं उनको. तो ये हमने देखा है कि इंडिया I think पाकिस्तान में एक अच्छी कॉमन बात है. स्टार था पूरे सब कॉन्टेस्ट, सब उन्हीं को ही फॉलो करते थे. ये कॉमन स्टार, मतलब क्रिकेट टीम, अगर इंडियन क्रिकेट टीम भी है ना, वो भी उनकी फ़ैन है. अगर पूरी आवाम है तो वो भी उनकी फ़ैन है. पाकिस्तान में वो इमरान खान है. इवन ऐसे प्लेइंग डेज में इंडियन टीम कॉपी करती थी उनको और देखने के लिए आती थी कि क्या लग रहे हैं. So No doubt. I think he was this, I think, mega superstar, and we are lucky enough. I mean, myself, Afridi, Uni, Wasim bhai, we're lucky enough, to be loved by Indians. Yeah, a lot of iconic players, in the history of both these countries. But we were talking about some of the greatest to ever play the game, beyond just countries and rivalries. Erin, a lot of big names have come forward in the past many decades from India, from Pakistan. But as a subcontinent, we have given so much to the game, and it's just very difficult to measure in terms of names and numbers.
प्रोफेसर, आई एम श्योर यू नो, आप भी जब इंडिया टूर किया आपने, जो आपकी मेमोरीज हैं प्लेइंग, कितना प्यार और कितनी अप्रिसिएशन मिली वहाँ से, और फिर यहाँ पे जब इंडियन टीम आई, आई एम श्योर वहाँ उसके भी कुछ किस्से होंगे जो आप शेयर करना चाहें अगर। देखें, बात तो हुई, शुएब भाई ने भी की, यूनुस भाई ने भी की, और कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मेरा भी एक्सपीरियंस इतना ही शानदार है कि जब भी हम इंडिया जाते थे, इंडिया के लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिलती थी। हम कहीं पे भी जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था, इवन होटल से बाहर निकल के कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना बहुत मुश्किल होता था। उसके लिए बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने पड़ते थे। फैंस आपको बहुत ज़्यादा घेर लेते हैं, आपको शॉपिंग नहीं करने जा सकते, कहीं पे भी नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी आपको कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन जस्ट टू कंट्रोल द क्राउड। तो आप सोचें कि इस तरह का प्यार और मोहब्बत आपको मिलता था। और इसी तरह जब वो भी यहाँ पे आते हैं, इंडिया के जितने प्लेयरों से हमारी बात हुई है, मेरे जितने टूर्स इंडिया में हुए हैं, एंजॉयड द मोस्ट। लोग बहुत शानदार हैं, और वो जो परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, वो जो दुश्मनी वाला आंसर कह के मीडिया में कहा जाता है, वो बिल्कुल नहीं है। दोनों रीजन्स के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम इंडिया गए तो हमें पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत मिली है। जब इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं, और ये इंडियन प्लेयर्स कहते हैं कि उनके वहाँ से ज़्यादा, इंडिया के लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान के लोग उनको प्यार किया, उनकी रिस्पेक्ट की है। तो मुझे लगता है कि ये जो आंसर है या ये जो बातें की जाती हैं, सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए, या कुछ पॉलिटिशियंस को शायद इससे फ़ायदा होता हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया इंडिया में ट्रैवल करने का, वहाँ पे खेलने का बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली। सिमिलर जब वो यहाँ पे आए तो हमारे लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये एक मिसिंग पार्ट है, नॉट फॉर इंडिया पाकिस्तान गेम बट फॉर द प्रमोशन ऑफ लाइक द गेम टू बिकम अ ग्लोबल गेम। जैसे ये एक इवेंट करवाया जा रहा है, अमेरिका एक ऐसी मार्केट है, उसको इंगेज करने के लिए इंडिया पाकिस्तान गेम से बड़ी जो इंगेजमेंट है वो क्राउड की नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर जो है उतना ही ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, उतनी ही ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ ऑन की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये होगी तो आपको किसी तरह से भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या खुद ही प्रमोशन ऑफ क्रिकेट हर तरफ चली जाएगी, और प्रेशर भी कम होगा। देखिए, हम इस मैच की बात कर रहे हैं, अगर आज इंडियन हार जाते हैं बुरी तरीके से तो सारा प्रेशर उन पर चला जाएगा। और ये हुआ है जब यूएई में वर्ल्ड कप था, पहले मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया। उस वक्त कोहली, उसके बाद फिर अंडर रेडार आ गए, और बड़े अरसे तक 2-3 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया कि बिकॉज ऑफ दैट गेम, कि वो जब कैप्टन थे, कैप्टनसी छोड़ी, और जिस तरह हमने 10 विकेटों से उनको हराया वहाँ पे। तो ये जब बार बार हम बात करेंगे, बार बार क्रिकेट होगी आपस में, तो ये टेंशन और ये जो एक प्रेशर वाले क्रिकेट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम लकी थे कि हम हर साल 2 साल के बाद, या वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनके पास है। तो मेरे ख्याल से ये रेगुलर अगर ये हो तो क्या ही बात है। look at there. There he is, little General Sachin Tendulkar himself. All the big names will be in for today. All the Bollywood stars are there. All the big names in cricket from all around the world have come for this spectacle. As you said, Marty, it's going to be an absolute party atmosphere there today. It's such a celebration of cricket. And from our perspective, just talking on the India-Pakistan rivalry, I've always been of the belief that the game has been celebrated with such love between all the players that are on the field. There's always a really great sense of camaraderie. There's always photos together, exchanging of jerseys, are coming together, which is what sport is. When you walk onto that field, you're representing your country, yes, and you're with your friends, but it's an even playing field for all, no matter what your background, what your history. It's a place to contest in terms of cricket, and it's always been fantastic to watch. Yeah, absolutely. It's you know, once you cross that line, there's no friends. It's you know, you're on the battlefield really. It's the best team's going to win. So off the field, absolutely, you're best of mates. And it was good to see Sachin there, you know, revving the crowd up, because you know, whenever his face shows up, everybody just starts screaming. And it's quite overwhelming when you're not used to that sort of thing. But look, the Indians and the Pakistanis are used to that noise, so it's really cool to have him there, and it's great for cricket to have him there as well. I mean, the greatest batsman of all time, the most runs, the most hundreds. He's got such a big following, even over there in the United States. So to have him there is awesome for the game, and I'm sure that Wasim is still getting his, you know, he's got his following over there as well. They're working on the coverage, so. We just see hopefully these covers coming off here. It would be ideal, wouldn't it? So we can get a toss underway. I'm excited for this game. It's going to be such a good watch. You're looking quite pensive there, Shoaib. What's going through your mind as you
look at these greats on the screen that you're very much obviously a part of. And The only thing I can see right now is all the blue shirts are there. There's empty seats at the moment. Empty seats. Don't Empty worry. seats are Empty blue. seats at the So moment. that's what I want to say. And feel like bowling at this track right now. the covers just are coming looks off amazing. now. Well, how's which is this knee great. going? Can you run Me down? is good, man. I just ran 4 miles yesterday, so you know, with the jogging pace. Yeah, keeping myself fit. Yeah, but this really tempting. This track is really tempting. I mean, if I ever get a chance to bowl on this kind of track, a double pace wicket, there's no certain bounce. I'm keeping in mind that the Indians are up against me. Hey, listen, I'm going to run the show. And By who hitting would you First all. ball, Be your first 106 ball, your first ball would be a 165 bouncer. Sorry? Your first ball would be a bouncer. That's going to be introduction. Okay. No, actually, that was a story. I mean, like nobody knew me before the '99 World Cup. So the Campbell, Alistair Campbell. I- yeah, Zimbabwean. No, no, the West West Indians. Indians. Oh, Sherwin Campbell. Sherman Campbell. Yeah, yeah. It was there. He goes to me and said, listen, behave yourself. really? I said, what do you mean by that? He says, just pitch it up. I said, listen, I need to introduce myself to the England crowd. So I pitched him a first bouncer and I just flicked it. He went for 6. He couldn't lift to the bat. So, and then I got abused very badly after that by my captain. Told you, pup, put it up. Why do you have to show yourself off? I said, sorry. I mean, But I have to. I like the show boring, right? I'm a kind of showman kind of thing. So What an introduction that was. But if you were bowling today, I'll keep it up. I'll be honest with you. I'll just keep it up. I'll keep asking the right questions right there. But I would definitely mix it up with the bounces. Yeah. बट ऐसा कौन सा बैटर है दुनिया का इस वक्त जिसकी विकेट आप इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा प्राइज्ड होगी टू टेक? I think Rohit looks very dangerous to me because ये इतना perfect player है, Rohit Sharma. He just plays very late. He plays according to the situation. He plays according to the merit of the ball. You know, he has such a range of the variety of the shots that he can do anything. When he settles in, he will hit you at will. Hit man. He can cut it, he can pull it, and he can hook it. He can play in the mid wickets, play down the track, finds the gap. Most of the people try to get underneath the ball and stand and Smash, live. yeah. What he does, he plays with the wrist and loop it up, toss it up, and he gets the 6. So he is very dangerous. I think if I was Shine, I'd love to take his wicket. And once Virat Kohli comes in, hey, listen, do not bowl, just talk to him, distract him. He's lucky guy that he's not playing against an era. I remember my eldest player and the fast bowlers that I was with, they never used to behave well with the batsmen. I'm not going to say those words, but you have to distract Virat Kohli, push him a little bit. Get in his head. Put him, just Little bit of- don't let him focus. A little bit of cheeky sledging. No disrespect to Virat. Virat is the greatest player ever. But if you let him settle down, na, And You'll you have a can trouble. see when his energy is up and Yes. he's like a little energizer bunny. He is everywhere. And not only is he getting himself up for the Yeah. challenge, but he's garnering the but entire the thing team. is, if he settle himself for a 2 overs, Yeah. then he'll make you run for the money. So make sure that little push, a little abuse, little this, little that, distract him, bit of bounces, because he's not a great hooker and puller Yeah. of the ball. Test him. What is the harm getting hit by a 2-6 by Virat Kohli? So what? Yeah. The third one, you'll have a chance. Yeah. I always believe you can hit me for 3 6s, but then on the 4th ball, bro, either is there, either is right up there. The price of the wicket matters. Or either it's the paramedics coming out onto Yeah, the man. field, It is tending so to your simple. sore Yeah, exactly. ankle. These are so simple to do. We just got word through as well that the toss will be happening in 10 minutes time, which makes it at 7:30 p.m. local time. So a little bit of a delayed start, but as with World Cups, Roha, I don't imagine we'll lose any time to Yeah. play, which is wonderful. And that's what we want. We want a full 40 overs of this game, the biggest matchup of the T20 World Cup. It has to be said, it is India versus Pakistan. It doesn't get any bigger than this. I want to come back to playing 11s a little bit now as well, because obviously we'll find out those in just a few moments after the toss. Does anyone have anything new to add now that they've seen that particular wicket? They've heard a little bit of what the captains have had to say in their press conferences before the game. Any changes? For me, Akshar Patel out for India and Kuldeep Yadav playing. For me, Okay. Why would you choose that? because Babar and sometimes Rizwan, struggle against
Kuldeep Yadav. So for me, Matchups. he can, and rest of the batting order and the all-rounders are there. So Dubey is there, Hardik Pandya is there. So I think they are still have a good chance. So I think they should do like that. Okay. Professor, coming to you now with another interesting question. वो ये है कि अगर इंडिया आज जीते, दोनों टीम्स से मैं आपका पूछना चाहूँगी, who is your key impact player from each side to watch out for today? देखें, पाकिस्तान की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये कहता है, जी कुछ कहना आप? Sorry to cut you there, just an update for our viewers. So toss time is 10:30 a.m. local time and the match is expected to start at 11 a.m. जी. अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो इस मैच में सारे ही इम्पैक्टफुल प्लेयर होने चाहिए, जो भी जाए वो अपनी कोशिश करे, लेकिन अगर मोस्ट इम्पैक्टफुल की तरफ जाऊँ, आई वुड लाइक टू सी नसीम डूइंग वेल इन दिस गेम बिकॉज द एरिया ही हिट्स विद द न्यू बॉल, he will get a lot of lateral movement from the pitch. तो मुझे लगता है कि नसीम can do a very good job on this track. दूसरी तरफ अगर मैं चला जाऊँ तो मुझे, हम बुमराह की बात कर रहे हैं, लेकिन we are underrating सिराज. जिस तरह का नया बॉल राइट एरिया में वो हिट करते हैं, he can also damage any technique of a batsman. तो मुझे लगता है कि बुमराह, we all know that what he can bring on, लेकिन जो सिराज हैं ही इज़ इक्वली चैलेंजिंग है, और दोनों तरफ से मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर का इम्पैक्ट ज़्यादा है अगर ये दोनों करें. बैटिंग में अगर मैं चला जाऊँ तो पाकिस्तान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो बाबर है, कि एज ए कप्तान, एज ए लीडर ऑफ दिस गेम वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है. जैसे शोएब भाई ने बात की, इट्स अबाउट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सम टाइम आपकी जो अपीयरेंस है वो मैटर करती है. तो बाबर आज कैसे अपने आप को इस गेम के लिए रेडी करते हैं, दैट विल बी इंपॉर्टेंट. और उस तरह अगर मैं चला जाऊँ तो रोहित शर्मा, कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कि वो इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग 100, इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग 50, इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ. कि एज ए कप्तान जब आप लीड फ्रॉम द फ्रंट के जोन में आते हैं और आप एक बॉडी लैंग्वेज कैरी करते हैं, तो फिर आपकी पूरी टीम आपके पीछे चलती है. तो दोनों के कप्तान, और दोनों के अगर मैं बॉलर में जाऊँ तो दोनों कप्तान मेरे इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए. मैं समझता हूँ कि उनको ये शो रन करना चाहिए. और अगर मैं बॉलिंग में जाऊँ तो आई वुड गो विद नसीम एंड सिराज. And I think we keep saying time and time again on our pre-shows how important the middle overs are, that 7 to 15 rather. It's so crucially important, and a man that springs to mind for India is Ravindra Jadeja. How damaging he can be with the bat and the ball in those overs. He can finish games here with the bat. He knows how to restrict during the middle. Marty, how do you try and neutralise a threat like Jadeja in these sorts of conditions? Yeah, I guess it depends on how he bowls. I mean, if he gives width, you know, he can be quite easy pickings. But if he brings the stumps into play every ball on a wicket that's a bit up and down, he becomes a lot more difficult. So getting on the front foot if he's bowling a decent Ethan, just trying to get him down the ground. Not looking to play too square. I think if you're looking square on this wicket with the up and down nature, you bring in LBWs bowled, caught into play. So looking to play with a straight bat, full face, and just try not to give him anything. And if he does give you width, then you got a lot of freedom to hit the ball wherever you want, really. That's the bad ball. You got to try and put that away. So it's just like simple batting, really, simple game plan. I mean, it sounds simple anyway, but to execute it is a different story. Well, play him, run a ball. The minute you get a loose delivery, just hit him for a six. They only bowled 2 overs of spin in the entire match in the first outing for them in this same venue, and that is one thing that I don't think we touched upon too much yet, Roha, is the fact that, you know, India have the privilege of being able to play in this venue already this tournament, so they do have that experience. Yes, it is a different wicket, but you know, how much does that speak for volumes? I'll ask the panel in terms of understanding the new conditions. So no one played here before, but the fact that they've had that one game already to familiarise themselves with how things are going, how big an impact will that play today, do you think? बिल्कुल है. देखिए, हम जो भी बात कर लें, जो भी स्टैट पे बात कर लें, जो भी डेटा है हमारे पास, लेकिन एंड ऑन द डे वही है कि किस तरह आप आके इसको, ये सारे प्रेशर को हैंडल करते हैं. पाकिस्तान का जो, इंडिया का जो गेम है, नॉट अबाउट स्किल समटाइम, नॉट अबाउट टेक्निक, फॉर्म होना ना होना, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे ख्याल से देखें, ऑन द गिवन डे अगर आप ऑन हो और आप चाहते हो कि कुछ करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. मेरे ख्याल से ठीक है, पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर होगी, लेकिन यही बात है कि अंडर प्रेशर में आप आते हो, स्टार बन जाते हो. तो मेरे लिए आज के जो मुझे लगता है कि मेरे लिए अगर मैच विनर पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं तो ही शुड बी फ़ख्र जमान,
क्योंकि Interesting choice because बिल्कुल। he has been scoring runs at every number that he's जी, gotten the मेरे opportunity. ख्याल No से longer देखें, an बस उनको opener. अपना ज़रा थोड़ा सा फोकस करना है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ पे आना है वापस. अगर वो बहुत ज़्यादा शॉट्स जो इनोवेशन शॉट जो वो कर रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं, वो ना करें. अगर वो अपना गेम्स की तरफ जाए, उन्होंने बारह इससे पहले भी 1-2 इनिंग खेली हुई इंडी की, और वही वो एक बैटर है हमारे पास. अगर वो जाके 40 बॉलें खेलते हैं तो उनके 40 बॉलों पे 60 रन नहीं होंगे, चाहे जो भी कंडीशन हो. उनके 40 बॉलों पे 80 रन हमें नजर वो करके देंगे. तो मेरे ख्याल से स्टैट और ये सब कुछ तो अपनी जगह पे है, लेकिन आज जो नर्व का जो मैच है, जो गेम है, बस वो नर्व्स को काबू रखें, चाहे बैटिंग करें, बॉलिंग करें. मेरे ख्याल से I वो think पे as a कामयाबी batter, होगी. I think Saim Ayub could have been a very interesting choice Yeah. on this very unpredictable track. वो आगे कुछ भी कर सकता है यहाँ पे. अगर वो आगे 30 कर गया ना, मुसीबत फट जाए नज़ारों में. लेकिन शोएब भाई देखें, यही मेरा सवाल था, मैं करना चाह रहा था कि उस पे इन्वेस्टमेंट की पिछले 6 से 8 माह की, डिफरेंट मैनेजमेंट्स ने उसको पूरा चांस दिया. यस, वो उस लेवल को टच नहीं कर नहीं सका, कर सका. लेकिन ही गिवन दैट ग्लिम्स के उसके पास वो एबिलिटी है. हाँ. नहीं, मैं मेरे ये ख्याल से तो आज- ऐसी आप सॉल्व कर लो पहले, मैं ये फिर पूछना मैं चाह जवाब रहा हूँ देता कि हूँ. कैसे एक ऐसा फैसला लिया गया कि दोबारा उसको उसका कॉन्फिडेंस अगर शेक कर दिया, नॉट टू गिव अ चांस इन अ फर्स्ट को, अब वो दोबारा अगर आता है तो क्या उसके दिमाग में होगा उस वक्त कि यार मुझे 6 माह के लिए तैयार किया था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, और वर्ल्ड कप के पहले मैच में मुझे फिजी मैं फिजी ये समझता हूँ, मेरी जाना के मुझसे पूछता है, हम तीनों का माइंडसेट एक ही है यार. एक तरफ बाबर अटका रहे और साइम अपना ये वो करता रहे अपना यार, उसे सेटल नहीं होने देगा फास्ट बॉलर कभी. और वो line ऐसा settle होना है. डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन चाहिए आपको. चाहिए आपको. मैं ये कहता हूँ उस पे क्यों प्रेशर हो जा रहा. नहीं मैं हाँ ना आई एग्री वही बात है. It's a way of playing ना, उसका वे ऑफ नहीं बाबर भी उतना ही प्रेशर उसको होना खेलने चाहिए. आई एग्री. दे जैसे वो खेलता है, Agree. और उसको फ्री माइंड दे दें, उसको खेलने दें, और साथ में बाकियों भी कहेंगे भाई आप भी थोड़ा सा हाँ, आप भी खेलने आए हो. अकॉर्डिंगली खेलें. थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट हम विजुअल्स देख रहे हैं. द कैप्टन्स आर वॉकिंग आउट फॉर द टॉस. तो Look at those outfits. That is representing. He I is love known the as effort. he is known as Mr. Pakistan, and to his right was I think Sheikh Pakistan. Bade interesting characters. It's our version of the Bami Army, Erin. But Love it. you'll spot them in every game. But Erin looks like it's more blue than green right now. But let's hope we get more Pakistani supporters in before the game starts. Oh, I think there'll be plenty of both, and you know, whatever happens, every boundary, every wicket, there is going to be an absolute roar, which is exactly what we wanted. The most wonderful atmosphere. This is what cricket is all about. Fierce rivalries. Yes, I mean, there is a lot of blue there. I can see you throwing your hands up, Shoaib. Where's all the Pakistanis? I There's would a few take- in the middle there. I feel sorry for them. मैं तो as an opportunity देखता. I mean, I used to bowl against about 100,000 people who were all Indians. So I would take it as an opportunity because there is a very less crowd of Pakistanis. I haven't seen the whole stadium, but it feels like there's more blue than a green. But you know, as a fast bowler, I would take the opportunity and just shut the crowd. Does it fire you up? Give them quiet, simple. Exactly. With your performance. Does it fire you Yeah. up as well if you ever Oh, hear any 100%. boos or? Oh, 100%. There is a lot of Indian sport are out there. I mean, I love them to the bits, but you know, the minute you enter the ground and represent your country and you're running in, it's not about you anymore. It's about my show. And it's about me taking the wickets and hurting your batsman. So this is what it is. As simple. You know, the best part of my career was to perform in India. Because once you perform in India, you quiet the whole stadium like a pin drop silence with your performance. That is the most satisfying thing I received in my career. A boundary and it's just Yeah, everyone seems Pin like drop. there's no one, but normally it used to be the full crowd. But as you score your runs, as you take your wicket, it seems like no one is sitting out there. So this is a special moment of my life which I'm sharing with you. Mari, what are your thoughts seeing those visuals? A lot of blues and greens. Excited. It's going to be great. It's going to be a really great game. The boys are right. Trying to quiet the Indian crowd all right. is Sorry to difficult, jump in. It but sounds like Ravi Shastri is finally ready for the toss. Let's go to New York City. Well, would you believe it? Pakistan have won the toss, and Roha, they've elected to bowl first. Oh my gosh, the smile on Babar Azam's face was from here to New York City, I reckon, all the way from Islamabad to New York City, because they won the toss, they got what they wanted. They're bowling first, and Rohit Sharma looked a little bit shell-shocked, didn't he? I don't think he liked the fact, obviously, that they lost the toss, and all of a sudden, you know, he's usually quite verbose at the tosses, and he didn't really have too much to say. Yeah. Food for thought now for India. Right, for sure. Rohit Sharma, Hafiz, you always talk about body language, especially at the toss from both the captains. Babar did seem a little relieved after winning that toss.
एंड रोहित शर्मा थोड़े से कम वर्ड्स इस्तेमाल किए उन्होंने. व्हाट आर योर थॉट्स? मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना मुश्किल डिसीजन था. दोनों टीम इसी के लिए तैयार थी कि जो भी टॉस जीतेगा उसने बॉलिंग ही करनी है. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे इसके ऊपर एग्जीक्यूट किया जाए. पाकिस्तान का टॉस जीतना एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि स्टार्ट अच्छा हुआ. लेकिन हमने देखा है कि अगर आप ऐसी पिच पे भी बुरी बॉल करो तो आपको मार पड़ती है. तो मैं यही चाहूँगा कि पहले 6 ओवर या पहले 10 ओवर में हम अपना जो पंच है वो लगा दें और उसमें 4 से 5 आउट करने हैं. अगर हमने 4 से 5 आउट नहीं किए पहले 10 ओवरों में तो हम बैकफुट पे चले जाएंगे. क्योंकि अगर इस पिच पे इंडिया की जो टीम है वो 140 रन कर देती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी. फॉरगेट अबाउट ऑल अदर पार्ट्स. लेकिन अगर हमने 5 आउट पहले 10 ओवर में ना किए तो हम उनको वो फ्रीडम दे देंगे कि वो 140 रन कर दें. तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान के हाथ में है. वो तमाम चीज़ें इस वक्त तक हमारी फेवर में चल रही हैं. हमने टॉस जीत लिया. 4 हमारे बेस्ट बॉलर फास्ट बॉलर वही खेल रहे हैं. लेट्स सी हाउ दे विल परफॉर्म. और एज ए पाकिस्तानी मैं यही चाहूँगा कि वो जो पहला पंच है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर एक पहला जो पंच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए. Well, job one done. They won the toss for her. They elected to bowl first. Shoaib, they've got to get the most out of this now. They've got a little win in winning that toss. They get first go at the deck, that little green-looking cracked seamer that we could see there in New York City. How best do they exploit these first 20 overs? Well, just swing it in the right area, pitch it up. Your strength is to bring the ball in for the right-handers, and I think Shaheen has that magic. So is Naseem Shah. I would rather go with the new ball with the Naseem Shah and Shaheen Shah because they ask the right question, the right length, because their length is a bit difficult. So just pitch it up, assess it, how much is swinging, how much is seaming, how much is nipping through, what kind of length that I should be bowling. Within 2-3 balls you get to know as a fast bowler, if you're smart enough fast bowler. And they are. And you know, let the batsman keep on guessing what kind of game he has to play. Because you have to restrict as a batsman. You can't go for a cut, we can't for a longer drive, we can't go on a front foot. So let him assess that. With that assessment, if Pakistan able to take some wickets, and if takes some wickets in quick succession for 3-4 wickets, I think Pakistan will right it back into the game. The weather favoured us, the luck favoured us, and now we have a pace battery, which has the wicket that is just a heaven. Just go out there, hit the right deck, get people out, put India under pressure. Trust me, if you expose Indian middle order, very first half, they get always in trouble. उसी के साथ मैं यूनुस आप पे आना चाहूँगी बिकॉज हम बात यही कर रहे थे मिडिल ऑर्डर को कैसे टैकल करना है, उन मिडिल ओवर्स में कैसे बॉल करना है. और हम इमाद वसीम आज के मैच में फिट है तो ही इज in place of Azam Khan. What impact will he create and how will he support the 4 fast bowlers? अच्छा इंडक्ट है हम अगर उनकी बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि स्पिनर्स पे थोड़ा प्रॉब्लम है. वो जो एक मिडिल का फेज़ है वहाँ पे हमारे पास विकेट्स नहीं आती. अब कैप्टन उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, उनको सर्कल में बाजू का 2 बॉल कर रहे होते, पहले पावर प्ले में भी बीच में कर रहे होते. लेकिन रिसेंट पास में मैंने उनको देखा है कि वो आके वो जो 7 से 15 ओवर के बीच में भी बॉल करते हैं. तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, हमारे अगेंस्ट जो है वो टीम इंडिया है जो कि स्पिनर्स को अच्छा भी खेलती है और उनके पास राइट लेफ़्ट बैटर भी मौजूद हैं. तो उन्होंने एक कम्बिनेशन इस तरह का बनाया हुआ. लेकिन वही बात है कि देखें सीनियर प्लेयर जैसे इमाद वसीम है, तो अगर आज के मैच में वो आके परफॉर्म करते हैं तो टीम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है. और मेरे ख्याल से जैसे वो उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमारे सामने है, तो अगर वो हमें आके अपने 2-3 ओवर में 2 से 3 आउट करके हमें देते हैं, आउट तो करने पड़ेंगे. क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर आप हमारे फास्ट बॉलर पहले 6 ओवर में आपको 4 भी आउट कर दें, 5 भी आउट कर दें. तो अगर मैं उनकी बैटिंग देखता हूँ तो उनके पास फिर कुछ ऐसे 1-2 ऑलराउंडर, ख़ासतौर पे जडेजा की बात कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, और ये हमेशा हमारे खिलाफ परफॉर्म करते हैं. और ये 50 ओवर का मैच है नहीं, पूरा दिन की बैटिंग करनी नहीं उन्होंने. अगर उनको 10 ओवर भी इकट्ठे मिलते हैं और 10 ओवर में कहीं जाके वो 70-80 रन कर देते हैं और अब 140 से 50 रन ऑन बोर्ड हो तो फिर मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए. तो मेक श्योर करें कि जो मिडिल का फेज़ है वहाँ पर आउट ज़रूर करें. मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा मानता हूँ कि टॉस डिसाइड नहीं करता मैच को. पाकिस्तान टीम के लिए अगर मैं एक छोटी सी सुजेशन यही देना चाहूँगा कि वो टॉस जीतने वाला जो जहन है उसको छोड़ दें. जस्ट गो आउट देयर एंड एग्जीक्यूट योर प्लान्स अकॉर्डिंगली. क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि हमने टॉस जीत लिया है और हम मैच जीत गए हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ये पाकिस्तान बॉलर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो टॉस के जीतने की खुशी को साइड पे रख दें
और एक अच्छी एग्जीक्यूशन जो है वो करने के लिए तैयार हो जाए। Yunus Bhai, it looks like it's time to go through the playing 11 for Pakistan, if you please, kind sir. El Capitan. Look at that. Babar Azam, Rizwan up the top, and Usman Khan. What a damaging top three. बिल्कुल जी, जैसे हमने देखा बाबर आजम और रिजवान और उसके बाद उस्मान। अगर मैं बाबर आजम और रिजवान की बात करूं तो ये कंडीशन ऐसी है कि इन दोनों को, इनमें से एक बैटर को आखिर तक खेलना ज़रूरी है। ठीक है, आज हम स्ट्राइक रेट की बात नहीं करेंगे, अगर ये इनकी जब ये अभी तो खैर हम चेस करेंगे, लेकिन इनका फिर भी चेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारे मैचेस में देखा कि जब चेस करने तो आपका एक बैटर आखिर तक खेलेंगे। उसके बाद हम फ़खर की बात करेंगे, शादाब की बात, ख़ास तौर पे फ़खर को अपनी जो बैटिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव बैटर हैं और उनको पता है कि उनको कैसे बैटिंग करनी है। बारहा ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेट खेल चुके। उसके बाद शादाब खान और इफ्तिखार, ये एक दोनों ऑलराउंडर ऐसे हैं जो कि शादाब को जैसे हमने देखा है कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो आई होप कि उनकी जो बॉलिंग है वो उसमें हेल्प मिलेगी, जो लास्ट मैच में जिस तरह उन्होंने बैटिंग किया। उसके बाद फिर इमाद वसीम का आए हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये अगर हमें मिडल में 2 एक आउट करके देते हैं तो हमें लगता है कि टीम इंडिया जो है वो रन्स नहीं कर पाएंगे जिनके लिए वो ज़्यादा मशहूर। उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर्स, यहाँ पे इन चारों फास्ट बॉलर की अगर मैं शाहीन की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, हमें इनको क्या करना है, इनको अपना रोल विद इन देमसेल्फ डिफाइन करना है कि किसने अटैक करना है, किसने थोड़ा सा डिफेंड करना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 4 फास्ट बॉलर आएँ और अटैक करें। तो मेक श्योर करें कि ये खुद से ये कोई ऐसा प्लान बनाए, ठीक है कप्तान की तरफ से भी होगा, बॉलिंग कोच की भी तरफ से, लेकिन खुद भी ये कोई ऐसा प्लान लेके आए कि मुझे अटैक करना है, मुझे थोड़ा सा रन ज़्यादा कंसीड नहीं कराने। तो अगर इस फॉर्मेट से जाएंगे, मेक श्योर करें टीम पाकिस्तान के 120 रन से ज़्यादा ना बनने दें, ताकि जब चेस करने में तो हमें आसानी हो। Thank Look you at that. so 100 matches for Rizwan today too. Let's hope it's a good. lucky omen. Yeah, what a milestone for him. Shoaib Akhtar, if you could please walk us through that Indian playing 11. या आउटफिट से तो यूनियन काउंसिलर लग रहा हूँ, लेकिन वेदर रिपोर्ट दे रहा हूँ। आई थिंक द क्वेश्चन दैट आई रेज्ड एंड गपी एंड यूनी एंड हफीज, दे नो बैटिंग, मुझे तो बैटिंग ज़्यादा पता नहीं। इफ यू गेट थ्रू दिस, रोहित, कोहली, पंत, सूर्या, दुबे, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इफ यू एक्सपोज दैट फर्स्ट 3 ना, मिडिल ऑर्डर ओपन हो जाता है। बट इफ ही प्लेज मोर देन 5 overs, रोहित शर्मा, then you're in big trouble. If he plays more than 5 overs, he will mint through you. He capitalized on a situation like no other Virat Kohli. Punt, obviously explosive player. Explosive. मैंने हमेशा देखा है, ये अगर पहली 4 विकेटें इनकी गिरती हैं, अंडर प्रेशर होता है, तो मिडिल ऑर्डर इनका डेवलप खुलता है। दुबे, obviously, it's going to be a big game for him. Big game for him. He's a very, very experienced guy with the great talent. But you know, जब फंसता है हार्दिक, तो फंसता है, चैंपियंस ट्रॉफी में फंसा था, लेकिन बट इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेयर। बट यू थिंक आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 इज जस्ट राइट देयर, आपको वहाँ पे विकेटें लेनी है। अगर पाकिस्तान ही एक्सपोज करने में कामयाब है, मज़ा आ जाएगा। बट यू नो अगेन, बाद में हर्षदीप भी बहुत सीम बहुत अच्छा करता है, सिराज का सीम बहुत अच्छा है, बुमराह ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक टैलेंट इन द बॉलिंग। अक्षर पटेल, बात नहीं मानेंगी, यूनुस की अक्षर और खेल रहे हैं, जडेजा खेल रहे हैं, कुलदीप नहीं है। So, but their batting lineup looks a very strong unit. Till Surya Kumar Yadav, he plays इनका साय में युग है। So, तो मारता है शॉट, अच्छी मारता है, but if he doesn't get the platform from them too, and if he gets out early, Virat Kohli, look, They'll there be is a in problem. trouble. There is a lot of pressure. आप मानो ना मानो, जो मर्जी कर लो, सबकी टांगें कांप रही होती हैं, सब फंसे होते हैं। अब रोहित शर्मा का इंटरव्यू देख लो, you look a little lost. Because he wanted to bowl first, but you know there is a lot of pressure on Indians right now. The reason why, they know Amir, Shaheen and Naseem. मैं 2 लेफ्ट आर्म को नहीं नया बॉल दूंगा, नहीं दूंगा, बिकॉज मैं फंसाई रखूंगा दोनों सज्जों बैट्समैनों को, दाएं हाथ के बैट्समैनों को, एक खबा और एक सज्जा वाला, ये मैं कराता रहूंगा इनको। So I think India looks a very tough side. This is the main hurdle. This is the World Cup winner team. But if Pakistan crossed this hurdle, I think you are asking yourself a right question to be in a finalist. Pace, swing, bounce, lateral movement, tennis ball bounce. Who knows what we're going to get in New York City. But one thing's for sure, Pakistan gets first crack bowling on this deck. And as Shoaib rightly said, hopefully it does suit the men in green. But before we head to live play, we absolutely have to give away a few prizes from yesterday, Roha, and of course, give you a chance to win some for this particular game. Up first, it is our Park View Winner Mobile.
I'd like to introduce the winner from yesterday's. And it is, let's get this graphic up on the screen. Congratulations to Ghazenfar Ali Riaz. You are our winner of that mobile phone. Congratulations. And if you'd like to get your hands on one for this particular match, then all you have to do is simply answer the question on your screen. Which countries are hosting the ICC T20 World Cup for 2024? Very simple to win that mobile. Just jump on the official Facebook page for Parkview City Islamabad and Parkview City Lahore. And then number 2, Roha, our favourite perfume going around here in Game On Hair. It is, of course, our J. Junaid Jamshed Winner Perfume Competition. And this question, very simply, is which 2 countries played the first ICC T20 Cricket World Cup match that ended in a tie? You are laughing on my right. Interesting question for an interesting match. but- Absolutely. Answer that question by calling that number that was just on your screen. Roha, I think Marty Party needs to make an oracle prediction. I just got to put it Our out on there. here. in-house genie. Please, Pakistan. Go on. Please, Mari. I'm thinking Pakistan are going to win tonight. Oh, there we go. There we are. There we are. Good Why? one, Mari. I don't have an exact margin or anything like that. I just think they're going to just get over the line. They're going to bowl extremely well, restrict India to a low total, and they'll chase it down. What What are is the Indi- lowest total that you think? Well, I think it's going to be around about 117. 117 Good on the man, board. Mari. That's the prediction by Mari. Shoaib, what are your predictions? What are India posting on the board? और फिर of course जीतेगा कौन? I think 130. 130. Professor, I just want Pakistan to win. plain and simple. Exactly. I don't know I so don't much. want to be a Pakistan. predictor, but I want Pakistan to win. That's it. Pakistan I is tell you winning. what, if it works out, check out a certain reel that was just posted on your Instagram account, and I'm going to claim all of the credit. But जी यूनिस, before we wrap up, आपकी quick predictions क्या post करेगा इंडिया और कौन जीतेगा? 142 और पाकिस्तान जीत रहा है. Right. So 4 and 4 in Roha, favor of I Pakistan. have to and ask you, my beautiful co-host, what do you think? You look I a lot more think- excited since that toss, it has to be said. It really has lifted everybody's spirits, but I think Pakistan now have a chance because everything is working in their favor, as Shoaib said, the weather, the pitch, except for the crowd, of course. That'll be interesting to see, but all in all, a great game of cricket is to be expected just shortly. Hopefully, बारिश अभी थम जाएगी और वापस जो है game की तरफ हम जाएंगे. But gentlemen, thank you so much for joining me on this pre-match show along with Erin Holland. Thank you so much, lovely. And we hope your prayers work in favor of Pakistan. This was our pre-show for the big game between India and Pakistan. We're going to go ahead towards a short break now. And when we come back, we'll take you to New York for the live action.